So I would like to start with this image that you see on the right side of the screen, which is called the Cretan Labyrinth. This labyrinth is, whoever is interested in Greek mythology must have heard of the very famous fight between a Minotaur and Theseus, which was a Greek god. And this labyrinth basically depicts and emphasizes about how life is a complex, multifaceted, full of challenges labyrinth. And sometimes we feel that it is difficult for us to cope amongst that. And to be able to find the space that could actually narrow down those challenges and find us a way home or find our way to success is the secret that lies in dealing with stress and building resilience. So between stimulus and response, there is a space, and in that space is our power to choose our response. And in our response lies our growth and our freedom. That is a very famous quote by Viktor Frankl. So if I don't know if any of the participants can tell me what stress is. What do we believe that stress is? So basically, Allah has planned and Allah has built human beings in a way that we are very resilient individuals, and we maintain a body in a state of what you call a homeostasis, a calm, steady state in which the body functions in itself, the mind functions, the spirit functions, our soul functions. So any disturbance or any response in the body that is created because of any kind of stress that we feel is basically called stress. And Hans Selye was one of the main psychologists who gave the concept of stress, saying that it is a condition in which human systems respond to changes in a normal balanced state. And it is not the stress that kills us, but our reaction to the way we deal with it. In my view, stress can be positive as well as negative. Okay. So how do you think stress can be positive? Positive stress always help out or encourages the person to do any specific act. Absolutely. So basically, if, for example, we have an exam, or if, because we're dealing with the legal profession here, if there's a case that's going on and somebody who feels that they don't need to take stress and are sitting in a relaxed state, I mean, I don't think they'd work hard for it. They wouldn't move themselves to that extent. They wouldn't study for it. They wouldn't go through the files because there's no stress involved. So the body can utilize stress in a very positive way, which is what we call a condition of eustress. That is a positive stress. And that positive stress is a manageable stress which leads to growth and competence in an individual. Since different people deal with different reactions to situations, the positive stress helps us, it motivates us, it gives us energy, it is perceived within our own capabilities, and I feel that we are able to reach out to ourselves, it's exciting, and it improves performance. On the other hand, if this stress becomes uncontrollable, it becomes prolonged, it can we feel we're unable to deal with it, then that is the state when this eustress changes into what we call a distress. And distress leads to other mental incapabilities. So distress can cause anxiety, it could be short-term, long-term, it feels unpleasant, and it can lead to various mental and physical problems. So I hope we're clear about what stress is about: positive stress and negative stress, acute stress and chronic stress. So a normal person needs that kind of positive stress or eustress to be able to function and with emancipation in a society. So the reason, I don't want to be too medical or too scientific about this, but I do believe that we need to understand what's going on in our bodies when we talk about stress. For any individual, in layman terms, जब भी we feel any kind of stress, हमारी body जो है, that goes through stages of what you call stage 1, stage 2 and a stage 3. अगर for example, अगर किसी किस्म का stressor हुआ, the first reaction of the body would be that it would be alarmed. क्या होता है? If, for example, you know the body is built for a flight or flight response. If you see a snake in front of yourself or somebody assaults you, what is the first thing that you think is going to happen? Anybody? Can somebody respond to what do you think would happen if you'd face somebody with an assault? Somebody comes at you with a knife in a court setting. What do you think is going to happen to the body? Immediately the body will go into defensive mood. प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा. मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, तमाम जो हमारे ऑर्गन्स है वो रन और फाइट के लिए रेडी हो जाएंगे. बिल्कुल.
बिल्कुल, absolutely. तो जो हमारा adrenaline rush है या body का flight or flight response है, that is set in such a way कि जिस तरह हमारी आंखें खुल जाएंगी, pupils dilate हो जाएंगे, heart rate increase करेगा, the body will start pumping blood faster, the heart will start working fast. हमारे जितने muscles हैं, the body, the blood circulation in the muscles will increase so that we are able to escape from that route, stop that attack and run away. That is the alarm reaction, which is stage 1. अच्छा, अब what happens is when any kind of stress comes in, हमारे stress hormones release होते हैं, which is one of them is called cortisol. You must have heard of it. Whatever happens is that if that एक persistently समझें कि एक assault चल रहा है या we are in a state in which there's a kidnapping situation or there's any kind of continuous stressful condition, whether it's a slow kind of a response or a rapid attack, so the body goes into हमारा cortisol कम होने लग जाएगा, the heart rate and the blood pressure starts regulating back to its normal state. But एक element ऐसा आएगा जिसमें जितने हमारे body के resources हैं, they are utilized, वो खत्म हो रहे हैं, and that is when stress will become resistant. Resistance के अंदर चला जाएगा, हमारी body जो है वो repairing की ability को lose करने लग जाएगी, and then that is the stage in which either we will go towards absolute homeostasis, which is the original pre-stress condition, or if it prolongs for a longer time, then the body would enter into an exhaustion phase in which all the fuels of our body, our hormones, our heart, our lung, everything loses the capacity to respond. और इस mechanism को जो stress की coping का body पे से गुजरता है, that is called the general adaptation syndrome. This is again what I had explained to you earlier, that if you do have little tension, if you have, that is also not good for the body. When there's optimum, then you're heading towards a slight fatigue. A little bit of fatigue can be good for the body to repair, लेकिन अगर वो too much में चला जाएगा, the body will get exhausted and head towards distress, and then the body will start breakdown in terms of physical capacities and mental capacities. Okay, so now I think the reason that I wanted to place this here, the model of judicial stresses, that I'm dealing with all of you from a legal profession, which is a very sensitive place. Occupational stress in a legal profession is very high, and especially as we discussed, we have more females on board. So I thought the model of judicial stress, which was given by Monica Miller in the US. Unfortunately, there hasn't been much research in Pakistan about judicial stress and occupational stress in different settings. So this is a model which is very much highlighted these days in even Harvard Law School and other international forums also. So basically, when you talk about mental health and the judicial and legal system, they are inextricably tied. And I think that there is no immunity from mental illnesses in judicial settings also. And there's a lot of vicarious trauma going on in the courtroom. The reasons being that the challenges associated with having to decide the fate of others and witnessing increased violence and threats towards judges and the legal personnel these days, and then repeated exposure to gruesome evidence of graphic testimony. These are various reasons that we feel that the occupational stress in the legal system is higher. What could be other reasons of this increase in stress in legal profession? Would somebody like to highlight a few? Would somebody want to maybe highlight one or two more reasons why there is more stress in a judicial system? Workload, I think it contributes a lot towards stress. Absolutely, madam. That is one. What else? In my view also, the workload and backlog is one of the main issue. Absolutely. So basically, when you talk about the model of judicial stress, हमने तीन domains को, three primary groups that we need to deal with. The first thing we need to understand is that, of course, when you put it in perspective, the predictors and outcomes of stress in a judicial setting or with people with the legal profession are variable. They're very diverse because there's no uniformity of reactions. Everybody is coming from a different background, a different set of symptoms, a different set of personality traits. So we usually divide it into three primary groups which deal with how the person or what the outcome leads to. The first is personal characteristics of the individual. The second is job characteristics, and the third is environmental characteristics. When you talk about personal characteristics, again, age, young age, lack of experience, or maybe extremes of age, that those are chances of more vulnerability. Then gender, like we discussed, even in mental illnesses, unfortunately in our ethnic population also,
the gender incidence of depression and other comorbid illnesses, psychiatric illnesses, and stress is higher. And then because of gender role and disparity and discrimination, those are also factors which lead to an increase in the stress. And then social support, time on the bench, compassion and empathy. What do you think compassion and empathy would be when it comes to stress in a legal system? How do you think it could be related? Compassion kya hai or empathy kya hai? Would somebody like to tell me how empathy can lead to more stress in a judge? So, basically, when you are able to empathize, empathy means putting yourself in the person's shoes. And somebody who's an individual who feels very sensitive for other people and sort of places themselves in the other person's shoes has a tendency to experience more stress because they take everything to the heart. So people who are more compassionate and more empathetic have actually a higher chances of developing stress. So being a quality, it can sometimes lead to a lot of distress also. And then their coping skills, the size of the family, non-work problems, interpersonal problems that you have, because everybody's coming from us. When you're sitting on a chair and you're sitting where you're deciding the fate of other people, but there's some problem back home, definitely your mind is stressed already. So that affects the way you function, your efficacy and everything. And then job characteristics, like you were mentioning, the time requirements, the type of trials. Criminal trials naturally have a higher level of stress involved. The frequency of stressful trials. If, for example, somebody who's sitting 4 cases or 4 trials in a week, that is a very high percentage. And usually in Pakistan, where we have a scarcity in this profession also, I believe that the workload is much more as compared to other places. Then there's urban and rural courts, the problems associated with that. We have a lot of logistic problems, the caseload size, and then environmental characteristics of crime awareness and faith in police. So the biggest problem is that whenever some kind of trauma comes in, which is whether from a legal system or a courtroom, that trauma can interfere with our own ability to feel safe in an environment and to sort of counteract the kind of stress that we're experiencing. And that causes a few personal effects and job effects. Personal effects include relationship qualities at home, health hazards, perceptions of security are disturbed, your sense of identity of self, satisfaction in life, your reactions to trauma vary based on past experience, and even trust in others and self. And job effects, of course, naturally with continuous stress, there's job satisfaction problems, job performance problems, decision quality is affected, the attitudes towards different kind of crimes because we become bitter to these testimonies that we've seen, the crime attribution similarly, then if there's any missed work because of personal problems, and then there's professional efficacy. So all of these factors were studied at the Harvard School of Law, and they found out that these are factors which lead to increased stress and diversity in responses. I just wanted to add कि जो है empathy जो है वो somewhat आपकी impartiality को भी to some extent जो है वो affect करती है. This is my view. कि आप क्योंकि being a judge you have to be impartial all the time, लेकिन अगर आप litigants के साथ थोड़ा empathize करेंगे और you will step into their shoes, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा to some extent वो भी जो है affect होता है. Absolutely, ma'am. That's such a wonderful point out there. आपको पता है 2 प्रोफेशंस जिसमें मेरा ख्याल है कि एम्पैथी डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड क्वालिटी काफी हद तक आपके इवन स्ट्रेस और उसको अफेक्ट करती है. एक लीगल प्रोफेशन और एक हमारा प्रोफेशन है डॉक्टर्स. बिकॉज अगर मैंने किसी को ऑपरेट करना है, ठीक है, आई एम नॉट अ सर्जन, बट इफ आई हैव टू टेक आउट द पस आउट ऑफ एन इंडिविजुअल और amputate somebody with a diabetes for a gangrene, and I am that empathetic that my own family member has faced that, I will think 10 times and it will affect the way I think. And similarly with you people being in such a sensitive position where decision making and everything is affected and somebody's life can also be at stake, empathy बहुत affect करती है. It's a perfect point that you put out there. Thank you so much. So stress related outcomes cause reduced physical and mental health, leading to isolation, irritability, anger problems, personality changes. It makes a person more vulnerable to hypertension, diabetes, heart diseases. Then there is reduced job satisfaction and performance because naturally you need to be satisfied and you need to feel fulfillment in whatever you're doing as an individual. And prolonged stress can cause a problem in that.
Then there's reduced professional efficacy, like we've discussed, and then the capacity to deal with and judge others also. And then perceptions of insecurity, naturally, a low perception of security in an environment where we feel that we're not safe because of any logistic problems. That leads to, like, for example, physical assault or inappropriate mannerisms, which are things that usually people face in our society, and especially in female gender. So these are things which cause increased worsening of stress-related outcomes. I'll take this opportunity, being a psychiatrist, to highlight that it's not only that the job efficacy and all of these things are affected. Judges are in no way, or even lawyers are in no way immune to developing mental illnesses and psychiatric illnesses. Unfortunately, because of the stigma of these illnesses in the environment and in the society at large, people believe that they can't reach out in terms of symptoms of anxiety, stress, depression, and especially something that you call secondary traumatic stress in judges is very high, which is again because of the trauma that they've witnessed and that gruesome testimonies that they've witnessed and assault cases and crime cases that they've witnessed. So depression, panic attacks, anxiety, phobias, obsessive compulsive disorders, post-traumatic disorders, even acute psychotic episodes. And I think it would be unfair if I don't highlight that even the incidence of suicide in a legal profession gradually, along with other places, is going very high. Unfortunately, Pakistan has not done much research on that, so we don't have any accurate figures to provide evidence for that, because it's usually just rubbed under the carpet, and people don't want to talk about suicide in this setting because they feel that, you know, people would sort of stigmatize the profession by saying, oh, that person is a judge, he himself is suffering from depression or is undergoing medication and all that. So I believe that that stigma is something that doesn't let us approach others and seek for help where it is very much required. So another very important thing that we'd like to emphasize when based on occupational stress in the legal profession is signs of burnout. Burnout syndrome is, I think we all know what burnout is because we've all been through that somehow. When there's chronic workplace stress that has not been managed successfully, whether it's prolonged periods of time, inability to sort of cope at home, balancing a work environment, because somebody who's working from morning to night is undergoing cases. It is expected by women that they'll go home and manage the house with the same verdure and the same efforts that they've always done, and it becomes difficult for our society to comprehend that sometimes work related balance is difficult to maintain, and this leads to poor performance and reduced creativity, exhaustion, I think personality cynicism at work, headaches, stomach aches, and somatic symptoms that are not explained by other causes. Without naming and with maintaining confidentiality, I see a lot of people from legal profession also, apart from doctors, coming in with somatic symptoms which have no cause. They've undergone a lot of tests, but they've never been screened for mental illnesses. And that is usually when they come in, we realize that they've been through burnout because of chronic working hours and stress. So there, when you talk about stress, and I think we've highlighted a lot, I'd briefly like to touch the areas of resilience. What is resilience? Can somebody tell me what resilience is? Flexibility or adaptability, precisely अगर कहें तो. Absolutely, बिल्कुल. देखें, हम जिंदगी के जिस तरह हर किस्म के मरहले में से गुजर रहे होते हैं, उसमें हमें ये नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होगा. रेजिलियंस डजंट मीन कि हमें स्ट्रेस ना हो, हम स्ट्रेस ना लें. दीज आर ऑल वेरी क्लीशे टर्म्स कि जी क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं. अभी हम यही बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रेस तो होना है. इट्स समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, but being able to bounce back from those difficult experiences, adapting well in this face of adversities or traumas or tragedies, और जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं, उसके साथ हमने कोप करके अपने आप को उसमें से कैसे बाहर निकलना है. इट्स बेसिकली कमिंग आउट एज अ फ्लावर इन अ पोजीशन ऑन अ प्लेस वेयर देयर इज drought or famine. Ability to cope up the untoward situation. Absolutely sir, very rightly put. कि आपने उसमें से अपने आप को कैसे कोप करना है. सिचुएशन तो है, सिचुएशन तो रहेगी, बट हम कैसे करेंगे. तो इसको लेमैन में रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आई पुट दिस इमेज ऑफ दिस राफ्टर ऑन अ राफ्ट, एंड इमेजिन दैट आप एक राफ्ट ट्रिप पे जा रहे हैं और आप मैप खोलते हैं और उसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ अनअवॉइडेबल रैपिड टर्न्स एंड दिस वाटर, कहीं पे इसका करंट ज्यादा है, कहीं पे आपका राफ्ट शिप कर रहा है. तो
इसमें आपने गुजरना भी है, you want to be a rafter and you have to get to the other side. So how will you be able to keep yourself on shore and keep yourself and swim out as a more courageous rafter? So that is the concept of resilience. आपका क्या ख्याल है, जिस तरह अगर एक बंदा raft पे, how do you think he would be able to create resilience or basically help himself cope? वो यही कहेगा ना कि दो तीन तरीके हैं कि या मैं somebody who's been through the process, मैं उसको supporters को enlist करूं, maybe they'll be able to guide me better, or maybe I'll carry an extra life jacket with myself, or maybe I'll take a stronger raft and build myself to that extent. So using the right tools at the right time. हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज से दिया है जो हर एक में डिफरेंट हैं, बट हमारी एबिलिटी टू कोप को, किसी के अंदर पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, किसी के अंदर एक खास किस्म की क्वालिटी है. सो टू बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज विद इन योर पर्सनालिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिलियंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद डीलिंग विद स्ट्रेस. So these are the four main equation of resilience, in which you feel that to create this coherence and to create a balance, you need coping, you need grit, emotional intelligence, and sense, which we'll just briefly discuss. Can somebody first tell me what emotional intelligence is? ये EQ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल. Why do you think we talk about emotional intelligence so much? So basically जो हमारे इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमें एंगर किसी चीज की तरफ होता है, उसको हम रीजन एंड रैशनैलिटी में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. एरिस्टोटल ने इमोशनल इंटेलिजेंस को EQ को डिफाइन किया था टू बी एंग्री at the right person at the right time for the right reasons. So to be able to analyze and manage your emotions and feelings is a key successful factor to deal with difficult situations. So that is one very important thing. एक चीज जहन में रखें कि अब रिसर्च ये कहती है that people with a high IQ and low EQ are more unsuccessful as compared to people with high EQ, and a lower IQ. So yes, balance होना चाहिए कि थोड़ा सा EQ, थोड़ा सा IQ, but these are situations. और emotional intelligence भी it's not कि सिर्फ inherent होती है, it's also a learned process. So to be able to cope और अपनी personality को उसके मुताबिक mold करना is one of the main reasons that you'll be able to cope with stress better. So it is again related to, I'm not going into detail with coping, with grit in your personality, how to tackle problems, which with past experience and making sense of past experiences and learning from them. So हर चीज को life में meaningful करना, something that you've been through in the past, I think with every step of the way we keep on learning. So these are the 7 C's of resilience, which is competence, an ability to handle a difficult situation, confidence, believing in your personal abilities as many or as less as they are, being connected, having a sense of belonging, having morals and values which are sort of unfaltered by external influences, by having that feeling that you're able to contribute. Whether you're taking 2 cases in a week or a single case, please know that every case that you're taking, every piece of work that you're actually adapting to and giving is contributing to the society in some way. And your ability to handle stress and to control it. So again, this is again a summary of that, so I'm going to skip this one for time. So this is something that I'd like everybody to focus on, because these are a few ways which are very important for promoting healthy lifestyles and creating resilience and stress dealing in a better way. The 3 main aspects and core features are self-care, perspective, and social support. And I think each one of them is as equally important as the other. So we'll start with self-care, because usually when you're in this fast-paced life in which you're dealing with professions, you're doing that well, you're dealing with a million things at home, often we tend to neglect our own self-care. So when you talk about nutrition, eating right, keeping yourself hydrated, then people from your profession, they should be careful about caffeine intake, too much caffeine intake, too much beverages. These are things which mess up your circadian rhythm and disturb your sleep. So an adequate sleep, because I mean, I have a couple of people from my family who are involved in the legal profession, and I do know that they just sleep for 2 to 4 hours in a day, which I feel is very unhealthy, and that is something that naturally you need to keep in mind. And then exercise in any way, whether it's yoga or it's, these days you have a lot of other options available on YouTube, any form of exercise like a walk or badminton.
And I'm sure, I hope that the societies that you're living in do provide you opportunities for that. Then mind and body relaxation, that could be namaz, it could be your spiritual healing, it could be any kind of meditation process that you believe in. These are things that help your mind and body relax. And then last but not the least in self-care is humor. ह्यूमर अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए जिसमें हम कोप करते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा मिच्योर और हेल्पफुल जो है डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज़ ह्यूमर. इंसान अपने आप को खुश रखने के लिए, आप पूरे दिन थके हुए बहुत से केसेस देख के आए हैं, अब घर आके भी अगर आप लीगल स्टोरी लगा के बैठ जाएंगे या प्राइमल फेयर लगा के बैठ जाएंगे, तो दैट विल बिल्ड अप योर एंजाइटी इन अ वे. So watching light things which involve humor and comics and all that, they enlighten your heart, and they are ways of catharsis. And when you laugh, they do say that laughter is the best medicine. When you talk about perspective, coherence. Can somebody tell me what we mean by coherence in an individual? So, you know, when you are working towards a cause like the legal system, and you're working, and that sense that everything that is happening is interconnected, and in the end something will be all right, or something will happen for the betterment. आप एक जिस जगह पे बैठे पोजीशन में हैं कि आपने डिसाइड करना है, और वो हर चीज इस तरह इंटरकनेक्टेड है कि आप एंड में इंसाफ ला रहे हैं, तो दैट सेंस ऑफ अचीविंग दैट सेंस ऑफ कोहेरेंस is something that will automatically help you deal with stress. And then optimism, which is योर सेंस कि आपको लग रहा है कि आप जो भी पोटेंशियल है, आप किसी गुड की तरफ या किसी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं. आप एक डिसीजन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अगली डिसीजंस पे होएगा, जो आपकी सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट करेगा, सोशल इवल्स को हटाएगा. सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन वट एवर यू प्रोवाइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिटमेंट इज समथिंग दैट, देखिए आप एक सुबह उठे हैं, आपने 8 बजे केस शुरू किए हैं, 2 o'clock तक आप चल रहे हैं, जस्ट रियलाइजिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम कमिटिंग टू, ये आपके सारे पर्सपेक्टिव की बात है ना, कि यू आर लुकिंग एट इट नॉट इन द सेंस दैट आपका वर्कलोड ज्यादा है, आप यूँ सोच रहे हैं कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम कमिटिंग टू, उसमें एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंगफुलनेस आएगी, एंड दैट विल हेल्प यू डील विद इट. एंड चैलेंज इज समथिंग दैट यू in a perspective you think that okay, this is something that I'm actually, it's a challenge for me to do this, it's a very difficult one, but I'll be learning something in the end, and something will happen for the good. And then connection is one of the most important, like humor is the most important part of self-care. Connection is the most important part of perspective. जो कहते हैं ना कि एक लोन राइडर या लोन राफ्टर है, उसके ऊपर ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, but being a part of a mutual network जहां आप ये believe करें that other people believe in me and I believe in them, so to sort of get away with this sense of competitiveness all the time, या jealousy all the time, या envy to some extent all the time, is a very important perspective that you need to keep in mind. To be able to learn from others, to make others believe in you and to believe in others, is the right perspective to be, to deal with resilience. And when it comes to social support में आपको पता है, friends are the best way. A lot of people tell me that, you know, you're a psychiatrist, how do you deal with your stress? So I always say that, you know, I socialize a lot, I have friends, and your friends can be the best places where you do your catharsis. And naturally, that is something that they provide you emotional support, esteem support by encouraging you, companion support, and, you know, advocacy support would be when you believe that something that you're available to right now will influence how others act from it as well. So अगर आपको लग रहा है कि आपके environment में किसी senior के level पे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक junior ऐसे affect हो रहा है, अगर आप मिलके उसके खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगी, but if you take a step towards recognizing that that person needs support, that is the best thing you can do, because, you know, what goes around comes around. So to avoid that kind of karma, being that sense of connectedness within a society is very important. So, you know, cultivating hope, that is one of the very essential practices. Practicing critical awareness and letting go of numbing and vulnerability. इसमें 2-3 चीजें जो मैं बहुत important mention करना चाहूँगी, that cultivating hope is कि hope सिर्फ एक emotion नहीं है. होप का मतलब ये है कि आपको जब ये लग रहा है कि नहीं जी, आई एम अनएबल टू डू इट, उफ मेरे से इतना काम नहीं होगा, तो यू टेल योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं, आई हैव बीन एबल टू डू इट इन द पास्ट, एंड आई विल बी एबल टू डू इट, एंड आई विल ऑलवेज बी अ स्टेप बेटर. And then practicing critical awareness is that you have to, sometimes we fall in a circle of self-pity, and we become very critical of ourselves, that अगर आपने समझे एक ऐसा केस किया जो आपको लग रहा है बाद में आपने गलत कर लिया है, या आपको लग रहा है कि आपने कहीं पे there was a room for improvement or something, that जो कि हो जाती है, which is all human nature,
So being able to stop falling prey to hearing negativity about yourself all the time from yourself is what is practicing critical awareness. And ये जो आखिरी point है, letting go of numbing and vulnerability, ये इस profession में और हर profession में बहुत important चीज रखता है. Whenever we feel कि हमें एक stress ज़्यादा आया है, तो we have a tendency, हम human beings हैं, हमें tendency होती है कि हम quickest relief की तरफ जाएं. Some people will be stress eaters, they overeat, gain weight. I mean, you know, I myself I'm a stress eater, and I believe कि अब हल्का सा stress आए तो आप कहते हो क्योंकि that's one way of coping. और हमारी मुल्क में, हमारी society में अक्सर कोई और होता भी नहीं है तरीका. So usually, you know, you're celebrating, you're eating out, you're in stress, you're eating out. So and then apart from eating, I think people go towards alcohol, towards drugs. So ये चीज जहन में रखें कि हम लोगों को as a society and especially आपकी profession में भी कोई immunity नहीं है कि कोई इस तरफ नहीं जाएगा. Recognizing if somebody is going towards medicines for help or drugs for help or relationship problems for help, इस चीज को combat करने में you have to work as a community. So one of my last slides before I end this is that the very important thing that I'd like to emphasize is, being a psychiatrist, I feel it's my responsibility to create awarenesses. The biggest problem is दुनिया की हर मुल्क में, हर profession में there are timely assessments and screening for mental illnesses, but unfortunately पाकिस्तान में बहुत कम है. Recently कुछ हादसों के बाद थोड़ा बहुत हुआ था, but अभी तक इसकी बहुत scarcity है, and बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनकी अपनी mental health affected होती है and they're unable to decide. So timely assessments and screening for mental illnesses is mandatory. So I would like to request whoever is at a place in where they can sort of form legislations about timely assessments in your profession as well, please go ahead and do that. Mental health is for all and nobody is immune to mental illnesses. And जो suicide prevention की मैंने पहले भी बात की थी, it's very common. You have to open up to honest conversations about mental health and for apart for providing resources. And हमारी जो ये illnesses हैं, psychiatric illnesses, इनको destigmatize करने की बात मैंने शुरू में भी कही थी. जब तक हम इनके साथ एक myths associated रखेंगे, जब तक हम इनके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड रखेंगे, उन लोगों का मजाक उड़ाएंगे या उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे जो मेंटल इलनेसेस में, वो तो पागल है, दिस वर्ड इज सो कॉमन इन आवर सोसाइटी, वो तो खुद दवाइयों पे, उसने क्या करना है, उसको केस दे दिया, वो तो खुद उसका दिमाग खराब है. सो दीज आर थिंग्स दैट वी जज अदर पीपल विद, एंड आई बिलीव दैट दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल डोंट सीक हेल्प, टू अवॉइड बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड विद. So this is one of my very favorite quotes from Rumi, which says, when I run after what I think I want, my days are a furnace of stress and anxiety. If I sit in my own place of patience, what I need flows to me without pain. From this, I understand that what I want also wants me, is looking for me and attracting me. And there is a great secret here for anyone who can grasp it. Okay, in the end, Furqan Sahab, I'd just like a very short activity for just 2 minutes. ये मैं आप लोग को एक सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि दिस समथिंग जो आप प्रैक्टिकली इनकलकेट भी कर सकते हैं इन योर एवरीडे प्रोफेशन. एक ये स्केल है जिसको हम होम्स एंड राय स्ट्रेस स्केल कहते हैं, और ये हम लेमैन में अपने ऑफिसेस के अंदर माइक्रो लेवल पे भी यूज कर सकते हैं. सो इस स्केल के अंदर बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सारे हैं. एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? ये सबको नजर आ रहा है? Yes, yes. अच्छा, सो आई वांट कि सब एक पेपर और पेन पकड़ें अपने आगे, और इंक्लूडिंग एवरीबडी, और ये जो लाइफ इवेंट्स लिखे हैं इनके आगे लाइफ चेंज यूनिट से स्कोर्स लिखे हुए हैं. जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेथ ऑफ स्पाउस 100, इधर राइट साइड पे सबसे नीचे लिखा है माइनर वायलेशन ऑफ लॉ. तो ये 43 पॉइंट्स इस स्केल के ऊपर है, जो एक साइकोमेट्रिक स्केल है. पिछले एक साल में जो जो इवेंट्स आपकी जिंदगियों में गुजरे हैं उनको जरा नोट डाउन करके उनके पॉइंट्स ऐड कीजिएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 2 minutes. दिस इज द लास्ट एक्टिविटी दैट वी डूइंग. So we would be amazed कि हमें पता नहीं होता कि जो लाइफ इवेंट के स्कोर्स होते हैं, इवन थिंग्स लाइक गेटिंग मैरिड, ये वेकेशन लेना, ट्रबल विद बॉस तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट चेंज इन चर्च एक्टिविटीज़ या यहाँ पे जो हम नमाजों के लिए जाते हैं, चेंज इन एक्टिविटीज़, स्लीपिंग हैबिट्स, वेकेशन, ये ईद क्रिसमस वगैरह, चाइल्ड लिविंग होम, ये सारी चीज़ों के स्कोर्स इंडेक्सेस बहुत हाई हैं. So I don't want anybody to be
labeled के इसलिए I don't want to know your scores. The reason I gave you this activity was कि ये जो scores हैं, जब आप इनको add कर लेते हैं पिछले एक साल के अंदर जो events आए होते हैं, तो वो आपको एक rough score देता है. Furqan साहब, this is one of my favorite activities and one of my favorite scales because ये हमारी एक rough सी screening कर देता है for people prone to developing mental illnesses. I'm done. Okay, so just keep your score to yourself. Let's wait for another minute to see if everybody's done. आपने सिर्फ आगे का नंबर उठा के उसको ऐड कर देना है. इसमें देखें ये टॉप 10 सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं जो हमने पीछे ऑलरेडी दिए हुए थे. आई एम नॉट गोइंग टू एम्फसाइज. सबसे जो ज्यादा स्कोर वाला दैट इज डेथ ऑफ स्पाउस, एंड देन डाइवोर्स कम्स इन सेकंड 73, देन मैरिटल सेपरेशन 65, imprisonment 63, मैरिज भी 50 पे है which is quite high. इसमें ये देखें, so this is very interesting कि जिसका स्कोर से 11 से 150 के दरमियान है, they have a low or moderate chance of becoming mentally unwell in future. People with 150 to 299 have a moderate chance, and people above 300, between 300 and 600, have a high risk of becoming ill in the near future. So this is something that you need to keep in mind, 150, 300 or 600. So ये बड़ी एक interesting activity and I'll definitely share it with somebody whoever wants to share it. या इसका नाम है Holmes and Rice Stress Scale. मैं मैडम एक चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर जैसे हमारा बहुत हैक्टिक रूटीन होता है, डेली रूटीन हमारा बड़ा हैक्टिक होता है, तो उसके लिए व्हाट वुड यू एडवाइज कि हमें ऐसी क्या छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो और हमारे लिए कन्वीनियंट भी हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जैसे अगर जिम करना है, इवन अगर वॉक पे भी जाना है, तो वो मेरे ख्याल में हम लोगों को उसके लिए 10 दफा सोचना पड़ता है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बहुत ही कन्वीनियंटली अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो कर लें, इनकॉर्पोरेट कर लें, ऐसी क्या चीजें आप कह सकेंगी? थैंक यू फॉर अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन मिस सना. देखिए मैम, दो चीज़ें जहन में रखें कि हम जिंदगी तो बहुत फास्ट पेस्ड है और सब कुछ चलेगा. एंड इट्स नॉट कि आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर आपने 12-14 घंटे ड्यूटी करनी है एंड यू विल गेट टाइम ऑफ. लेकिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमने एम्फेसाइज करना है दैट इज क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. आपके पास अपने लिए 15 मिनट हैं या 20 मिनट हैं. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. लाइक आई विल गिव यू वेरी पर्सनल एग्जांपल. आई एम यूजुअली वेरी बिजी. आई डोंट गेट मच टाइम टू हैंग अराउंड विद माई सेल्फ. मेरा प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिजी है. So what I do is that, you know, when I'm driving to work, that is my time. I put on music. Music helps me. चाहे मैंने कवाली सुननी है या मैंने नाच सुननी है आजकल या कुछ भी करना है. So these are things जो आपको अनवाइंड करती हैं. दूसरी बात ये, आप घर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपना प्रोफेशनल स्विच ऑफ कर दें. अच्छा, अब आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब की वजह से. आपने देखा है कि ये जिस तरह लेस्ली वॉक है, ये दिस वुमन जो जो आपने एक स्पेसिफिक दायरे के अंदर अपने ऑफिस में खड़े होके विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 स्क्वायर के अंदर अंदर आपने एक डब्बे के अंदर खड़े होके आप उस वॉक स्ट्रैटेजी को कर सकते हो. सो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग दिस. लेस्ली वॉक नाम है इसका. इसको सर्च कीजिएगा. सो आई बिलीव कि आपने बहुत बड़े स्टेप्स या यूं जिम जाना ये करना ये कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है. आप घर में हैं, आपने पीछे कोई अपने लिए गजल लगा लिए, कवाली लगा ली, आपको आर्ट का शौक है, आपने 15 मिनट वो कर लिया, आपने एक जगह पे खड़ा होकर योगा कर लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया. दीज आर लिटिल थिंग्स जो आपको खुश करे. देयर आर पीपल हु आई नो, जिस तरह वन ऑफ माय रिलेटिव्स, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ निटिंग. सो एवरी टाइम शी इज इन स्ट्रेस वो निटिंग नीडल्स लेके बैठ जाती है, या गाड़ी में बैठी, या किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को आर्ट का शौक है. तो ये छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ आप अपनी स्ट्रेस कोपिंग एनहांस कर सकते हैं. Thank you so much, madam, for your time. I think Dr. Saiba, you took out precious time, particularly on a Saturday, to be here. Sorry, I just joined a minute after you had already started, so I wasn't able to introduce you. But thank you so much. And I think our participants, अगर Dr. Saiba के पास कोई और सवाल है, तो please you can ask now in general over the whole program and the presentation that she had given. And of course, I think one of the most important things, and I'm glad that Madam Maria was able to get you, was that your expertise in this area. And that's where we're really happy that you were able to share with us a lot of those learnings, especially I think this last exercise was really helpful. Aziza Rahman Junaid Shah would like to ask a question. Please, sir. जी सर. मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाउंस बैक करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं. मतलब एक
स्ट्रेटजी उसकी क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब जिस तरह ऑफ कोर्स जिनेंद्र साहब, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। जैसे हम उस राफ्टर की बात कर रहे थे कि आप समझे एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप समझे कि आपने इन द मिडल ऑफ द नाइट ड्राइव करके कहीं जाना है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो आपने अपने स्ट्रेस के लिए रास्ते में क्या किया, आपने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर किया, आपने अपने साथ पानी या हाइड्रेशन का ख्याल रखा। ये तो मैं आपको एक एक्चुअल सिचुएशन बता रही हूँ ना कि दीज आर प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट यू कैन टेक। So this totally, the ability to bounce back totally depends on योर सिचुएशन। अगर आप किसी फैमिली स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है या आपको आप किसी इस बारे में बात नहीं कर सके, तो जस्ट सीकिंग हेल्प टू बी एबल टू बाउंस बैक। हो सकता है कोई और बंदा आपको ऐसे सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस में कोई ऐसी एडवाइस दे दे, या सिर्फ वेंट आउट करने के साथ आपको लगे कि आपके जो दिमाग का एक बोझ है, समथिंग दैट यू हैवंट बीन एबल टू डिस्क्लोज टू एनीबडी, अगर आपने एक चलते फिरते एक्स्ट्रा बंदे के साथ ये चीज डिस्कस कर ली तो वो आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। जो भी चीजें हैं, हर बंदा सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे करता है, बट टू बाउंस बैक इज जस्ट यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज विद इन योर कैपेसिटी टू बी एबल टू कम अप विद रेजिलियंस। I'm sorry, मैं आपको बार बार बॉदर कर रही हूँ, मैं दूसरी दफा पूछ रही हूँ। मुझे जो है वो मैम इस चीज पे बताइएगा कि कभी आपको बड़ी एक्सट्रीम जो है फीलिंग होती है डिटैचमेंट की, इवन विद द पीपल यू लव द मोस्ट, या जो चीजें जिनसे आपको बड़ी खुशी मिलती है, और आपको कुछ भी उसकी तरफ फील नहीं हो रहा होता, मतलब स्ट्रेस का वो लेवल आ जाता है और वो एंजाइटी का लेवल आ जाता है कि वो उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हमें अपनी डे टू डे लाइफ भी मैनेज करनी है, ऑफिस तो जाना ही जाना है, चाहे आपको कितनी भी डिटैचमेंट फील हो रही हो हर चीज से। तो वो मतलब ज़ाहिर है कुछ चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें ऑफिस भी जाना है, हर चीज को फेस करना है, वो करना, उसके साथ रहते हुए हम कैसे ये जो फीलिंग होती है हमें डिटैचमेंट की, आई एम श्योर सबको होती होगी, तो उस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो इट्स अ प्लेजर दैट यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सो डोंट फील दैट यू नो दैट यू आस्क्ड मी द सेकंड टाइम। इवन इफ यू आस्क मी 10 क्वेश्चंस, इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी टू आंसर। द सेकंड थिंग इज, देखिए मैम, सबसे पहले एक चीज जहन में रखिए, ये जो फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट दो किस्म की हो सकती हैं। या शॉर्ट टर्म होती हैं जिसमें आप एक सिचुएशन में और आपको फील हो रहा है कि मैं एक दो दिन के लिए या तीन चार दिन के लिए, दोज आर फेजेस दैट वी ऑल हैव, जिंदगी की ट्रांजिशंस में आते हैं, लाइफ साइकिल की फेजेस में आते हैं, आपको हार्मोनल फेजेस के अंदर आते हैं, दोज आर डिफरेंट फीलिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिटैचमेंट की सेंस इस तरह प्रोलॉन्ग्ड है जिसमें आपको कोर सिम्टम्स आ रहे हैं, या डिप्रेशन के या एंजाइटी के, या कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल से या आपकी बेसलाइन से हट कर है, आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. And that is the reason that I believe that even the Judicial Academy and all your profession, our profession, every profession should have counselors on board all the time. And I believe people who can play an active role in sort of emphasizing the role of those counselors is very important. जहां आपको कोई जज ना करे और आप बिना झिझक जाके डिस्कस करें, डिस्कसिंग, वेंटिंग आउट। एंड देखिए, आज अगर मैं एक स्ट्रेस में हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने घर भी मैनेज करना है, मैंने हॉस्पिटल भी मैनेज करना है, बट मैं कल को किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करती हूँ जो खुद भी इस सिचुएशन में है, who will be able to guide you in a better way कि यार मैं इस तरह कर लेती हूँ, तो I will feel at ease, and that sense of detachment and feeling that I am isolated या सिर्फ मैं ऐसे हूँ, मेरी perception change हो जाएगी. And starting to change the perception is the first step in dealing with these feelings of prolonged detachment. So I think the sense of connectedness that you have with other colleagues is one of the reasons and one of the ways in which you can get rid of this detachment. I would just like to add, Madam, that was a very interesting point. If I think about it from a more deeper perspective, I think har insan ke saath ye hota hai. And sometimes we may feel it stress, but sometimes it's the sense of self-actualization. So ek uska positive nazariyat bhi hai if you're in that deep spiritual sense. It's not so much stress, you also reach a point of detachment, you reach that point. Thank you so much for emphasizing that, because a shortage of time I didn't include that, but actually we जो Maslow की hierarchy theory है self actualization की तरफ हर individual जाता है, that is one of my very favorite ones, and I think eventually इंसान इसी तरह strive कर रहा होता है to achieve the best to the personal capabilities and fulfillment of whatever you are as an individual or your potential. तो ये जो short term feelings of detachment are they're different, but like you rightly said that if it is prolonged further, तो हमें that is when we need to seek help, professional help. I think we're good, madam. Thank you so much for joining us on this Saturday, and also during Rosa, particularly with your duties as well. And I think a lot of our participants really enjoyed their special session with you. We look forward to hopefully having future engagements as well.
If you'd like to leave, you can leave. I think Madam Maria is here, who may continue her module after. Thank you so much for having me on board. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mariam, for coming over. And with your permission, we would like to share your official phone number that you can provide later on with all these judges, because I believe that it would not only be helpful for their own work, but I'm sure that they would be needing other people to be helped out in such cases where they are putting up with stress and they cannot seek some professional help. तो हम वो कर लेंगे, because I think a part of our learning session is networking as well. And I think that unless you have the right person in the right profession to do that job, many of us, we are constrained and limited by our own professional limitations. तो हम वो भी इंशाल्लाह करेंगे, so that there is more knowledge sharing. It was a pleasure being on board. Thank you so much. Take care. Thank you. So let's start with where we left off yesterday, और फिर हमने आज नया मॉड्यूल भी शुरू करना है. I just had a small setback technology wise, so I've shifted to a smaller screen for now. So I hope that this session with Dr. Mariam was useful for everyone, and the way you have seen that the same concepts probably we also covered in stress management, but when the same concepts they are being done and covered by a professional, तो आपने वो देखा है कि उसका जो डायमेंशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. और जिस तरह से उन्होंने भी स्ट्रेस किया था इस बात को कि जो हम लोगों को पहले अर्ली डायग्नोसिस एंड देन seeking if that stress is something that can be handled on your own or you would be requiring a professional help, that is very necessary. So I'm sure कि आपको उसमें stress management में it has added to your pre-existing knowledge. Now come back to the communication skills that we were talking about yesterday for emerging leaders. तो हम कल barriers की बात कर रहे थे कि बहुत सारी जगहों पर as you are growing into your leadership roles, you will be requiring a lot of communication skills, और उसमें barriers जो आपको आते हैं बाज़ औक़ात you think that you can communicate well and you are prepared for it as well, but जो आपको barriers face करने पड़ते हैं उसमें कुछ organizational भी होते हैं, organizational policies होती हैं. I understand that in your organization probably there would be a policy which bars you from interacting with the media probably, or it is regulatory in a sense that it regulates your interaction with the media. Any sort of media आपकी policies होंगी कि अगर आपने किसी TV channel पे जाके बात करनी है, किसी radio channel पे जाके बात करनी है, तो वो उसके ऊपर आपकी policy guidelines ऐसी होती हैं कि which are not exactly, they do not bar you from going, but they contain you in a manner that you would rather not go and not share your thoughts, क्योंकि it is always safer to do that. तो मुझे जरा बताइए कि आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है टू कम्युनिकेट विद द मीडिया और टू द आउटसाइड पब्लिक. Since I am on a smaller screen, so I cannot see raised hand. जी मैडम एना. नहीं मैम, ऐसी कोई पॉलिसी एज सच नहीं है, और कि हम मीडिया से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है और मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ आप पब्लिकली कहें या मीडिया में अपना किसी किस्म का कोई भी ओपिनियन फॉर्म करें. मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई पॉलिसी. आई डोंट नो बाकियों का क्या कहना है. तो आप लेकिन वैसे मतलब कोई रिटन पॉलिसी नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट्स कंप्लीटली डिस्करेज्ड कि आप लोग इंटरेक्ट करें मीडिया के साथ. पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमारे यहाँ देना या कोई पब्लिकली कोई भी ओपिनियन देना वो इनकरेज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि व्हाट अबाउट फॉर एग्जांपल आपको कोई चैनल इनवाइट करे और वो आपको किसी करंट किसी क्राइसिस में बात करने के लिए ना कह रहा हो, फॉर एग्जांपल दे वांट टू जस्ट नो कि जी जुडिशियल प्रोसेसेस में क्या चैलेंजेस होते हैं, ओवरऑल आपकी उस पे क्या ओपिनियन है, तो वो आप जा सकते हैं. कैन यू गो टू टीवी चैनल्स? अलाउड टू माय नॉलेज, दैट इज नॉट अलाउड. इवन इफ यू आर राइटिंग अ बुक, अगर आप कोई किताब भी लिख रहे हैं लॉ के ऊपर, इवन फॉर दैट यू हैव टू सीक परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट. आप वो भी नहीं लिख सकते हैं. और ये जो पॉलिसी है ये आप कह रही हैं कि ये किसी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग कि वो मतलब वर्बल उसके अंदर जो है वो आमतौर पे ऑर्डर्स में मौजूद है कि आप इस तरह से मैं कुछ ऐड करूंगा इसके अंदर. इसमें ये है कि पॉलिसी जो है पॉलिसी रूल्स की फॉर्म्स में होती है जो कि सिविल सर्वेंट पे अप्लाई करती है जी, वही हम पे भी अप्लाई करती है. अच्छा ठीक है. And additionally I'll add this much कि यहाँ पे जो चीज है is there's a principle in jurisprudence, especially for judicial officers, which is when a matter is sub judice, meaning it's before a court,
to actually discuss it outside. So in that yes, I parameter, think that's the same for police officers as well. But I think that somehow I think the norm setting within the organization has been good in that sense के जो है ना इन्होंने इसको अच्छा verbally भी regulate कर लिया अब हमारे तो written के बावजूद भी there are people who always resort to some sort of comments of some form which become objectionable at the end. Aziz साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे. Yeah, जी. I just wanted to finish my point, then Aziz साहब add कर लें. One of the best examples in the judiciary is the first Chief Justice of Pakistan, who really set the bar for किस level of हम बाहर public में engage करें. वो इस हद तक करते थे कि अपने जो रिश्तेदारों की शादियां थी ना उसके अंदर भी refuse करते थे. He never gave a public speech. The only public picture we actually have of him, I mean, to this extent that the Queen ne unko award diya to become Sir. He was known as Sir Mia Abdul Rashid. He was the only person that year. Usually, Salana jo Queen hoti hai England ki, wo kafi list of names aate. He was the only person who refused to come because he said, "I am bound by my duties to the court and I cannot provide a public appearance." So I think this level के उन्होंने जो standard set किया था, unfortunately यहाँ पे तो हमारे magistrate judges हैं, they know as well. हमारे court के अंदर कुछ जो higher level के judges भी हैं, वो थोड़ा सा standards को थोड़ा सा उल्टा तरफ जा रहे हैं, but hopefully we can revive that principle because I think public engagement, you have to understand, for a judge it's extremely important to their position of integrity कि वो किसी के साथ कोई nepotism और वो ना हो. I think that stands in the decorum of the court. तो ये चीज़ इंशाल्लाह hopefully हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो और मौजूद कराएं इंशाल्लाह with our participants as well. जी प्लीज अजीज साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे. जी बस यही मैं कहना चाह रहा था कि डिस्करेज किया जाता है मीडिया से किसी किस्म का भी कांटेक्ट या किसी किस्म की भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने, और इसके अलावा वैसे भी सोशलाइज ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते. एक हद तक सोशल मीटिंग्स में जा सकते हैं और वो भी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे अगर हों तो ज़्यादा इजीली जा सकते हैं. इसके अलावा हम लोग तो इवन विदाउट परमिशन कोई कुछ चीज़ मतलब कोई चीज़ पढ़ भी नहीं सकते, कोई कोर्स भी नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हमें परमिशन लेनी ज़रूरी होती है. बाकी बुक वगैरह का मैडम ने बता दिया कि अगर कोई बुक पब्लिश करनी है तो फिर उसके लिए भी एनओसी हमें लेना पड़ता है. तो ये सिचुएशन होती है हमारे. Right. But I will just try to create sort of a diversion in this sense because I think what we have learned as an organization is कि हम लोगों के भी civil servant rules were there and everything was there, लेकिन depend करता है कि आपका public interface कितना ज़्यादा. But I think in this new era of media, social media, if you shut yourself out of these mainstream जो information channels हैं, तो उससे होता ये है कि आपकी एक तो perception building नहीं होती है, secondly आपके बहुत सारे your chances to grow as an organization they become very thin. तो इसलिए मेरा वैसे ये ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होनी चाहिए. आई थिंक कि हम लोगों ने भी बहुत मिस्टेक से भी लर्न किया. हमें तो वैसे बहुत ज्यादा एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट मतलब करना इसलिए पड़ता है बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चीजें हैं इस तरह की. बट आई थिंक कि हमने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाए हैं. बट आई थिंक कि मीडिया और इंफॉर्मेशन के दौर में एक पूरी जो एब्सेंस होती है, वैक्यूम होती है, इट ओनली जनरेट्स मिसकंसेप्शंस एंड about your role, about your work, about how you conduct the different things at your workplace. So I would strongly encourage if it is not something, because policies कोई भी जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि which is final in its own character. You change according to the changing times. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि उनको अपनी एक मीडिया प्रेजेंस भी रखनी चाहिए. पीपल वुड ऑब्वियसली वांट टू नो. मैं अजीज साहब आई सीन योर हैंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट के व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में देयर इज सम sort of space available, I think it would be very appropriate for the organization's image and for all the hard work that you are putting in as an organization.
बिकॉज जो अभी माज ने शेयर किया आई एम श्योर, बट आई थिंक कि जिस टाइम की ये बात करें उस टाइम पे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो एथिक्स थे और वर्क एथिक्स थे वो सब ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत ज्यादा फर्क थे, एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी वाज रेजिंग द बार हायर. लेकिन अब हमारे क्योंकि चैलेंजेस बहुत फर्क हैं, एंड आई फील दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन, बिकॉज जो लोग भी अब आइलैंड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेन स्ट्रीम में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दे एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट. अब यू माइट वंडर के बिलियनियर्स जो हैं और जो मतलब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल है, व्हाई डू दे want to be on the media, be why do they want to be show their presence? Because it is absolutely necessary for them to because एक change की tide होती है, और जब अगर आप जो उस दौर का जो मेन there is a tide of change, if you do not ride that change, it is absolutely essential for the organization not to be lagging behind. So I don't know, this is just a third person's perspective, but I think it can always help with the image building and help with the misconceptions that lie in the eyes of the public generally, या otherwise criminal justice system में बाकी लोग भी होंगे. सर अजीज आप बताइएगा, आप कुछ ऐड कर रहे थे. जी मैडम, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन चूंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और दोनों को देखा जाता है कि मतलब इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं इस चीज़ की तो हमें ना फिक्र होती है, ना ही हमें फिक्र करनी है, क्योंकि हम अगर ये सोचने बैठ जाएंगे कि लोगों का हमारे बारे में क्या परसेप्शन है, तो 50% लोग तो हमारे बारे में ऑब्वियसली अच्छा परसेप्शन नहीं रखते जिनके अगेंस्ट में डिसीजन आता है, और जो जिनके फेवर में डिसीजन आता है वो हमारे बारे में ऑब्वियसली अच्छा परसेप्शन रखेंगे कि जी इन्होंने बिल्कुल राइटली डिसाइड किया केस को. तो हमें इन चीज़ों को इतना नहीं देखना है. हमारा जो बेसिक जो एम है वो यही है कि हमने जस्टिस इम्पार्ट करना है. तो अगर हम इसको देखेंगे कि जी हम मीडिया में आए अपने परसेप्शन को देखने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए, तो फिर वो जो हमारा मेन काम है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, जो कि है इम्पार्टिंग द जस्टिस. जी मैडम सादिया, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बिल्कुल, अजीज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा. मैं भी बीइंग जज ये समझती हूँ कि मीडिया की डायरेक्ट मुझ तक और मेरी मीडिया तक डायरेक्ट कन्वर्सेशन और अप्रोच नहीं होनी चाहिए. वो इनफैक्ट इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज डिफरेंट टर्म्स में जा सकती है वो चीज़ें. हाँ, मगर मैं आपको भी सेकंड करूंगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरे डिपार्टमेंट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की कोई मीडिया वॉइस होनी चाहिए. कोई ऐसा फोरम, एक ऐसा ऑफिस जैसे हमारा एडमिन ऑफिस होता है, जैसे मेरा अपना एक ऑफिस है कोर्ट का, ऐसा एक हमारा कोई ऐसा ऑफिस, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कोर्ट्स की तरफ से बात कर सके. मगर जज कभी भी मीडिया से बात करेगा तो लगेगा कि वो अपने फैसलों को एक्सप्लेन कर रहा है, और जज अगर एक्सप्लेन करना लग जाएगा तो वो अंडर इन्फ्लुएंस फील होगा. ऐसे ही है कि स्पोक्स पर्सन आप देखें ISPR है और बाकी इदारे हैं, आई वुड स्टिल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, बिकॉज मीडिया के दौर में अगर आप ऐसे ही है कि आप कहें कि जी अब क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो क्योंकि हम तो चिराग जलाते थे तो हम चिराग ही जलाएंगे, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे. और आई वुड ऑल्सो डिसएग्री टू द पॉइंट कि हर कोई बंदा क्रिमिनल जस्टिस को एक्सेस नहीं कर रहा होता. जो पॉपुलेशन 50% हम भी, पुलिस भी जो है आधों के खिलाफ फैसला करती है, आधों के हक में करती है, हमने उस लिहाज से. लेकिन आई थिंक दिस अप्रोच वाज क्रिएटेड बाय द पीपल हु जॉइंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 30 years बैक. 30 सालों में आपको पता है कि पूरा जो द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, दुनिया बिल्कुल बदल गई है. तो जो पिछले 30 सालों की चीजें रेलिवेंट थी वो अब रेलिवेंट नहीं रहेगी. इट्स जस्ट अबाउट time how and when organization realizes that they need to move ahead with the different, because I think public perception जो होती है, क्योंकि it is a public that we serve, we are public servants. तो अगर पब्लिक समझती है कि ये criminal justice system, and I am speaking right now from a perspective of a person who talks about reforms in the criminal justice system, I have been working with the reforms not only in the police, because police तो एक उसका component है ना, जब तक पूरे आप CJS को नहीं देखते तो रिफॉर्म्स आपकी कामयाब नहीं हो सकती हैं. सो आई एम अ फर्म बिलीवर, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी कैन डिसएग्री कि हमारा सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है. मैंने पहले दिन भी ये बात की थी. आई डू नॉट बिलीव दैट द सिस्टम इज डिलीवरिंग. आई डू नॉट बिलीव दैट एज पब्लिक सर्वेंट्स वी आर फुलफिलिंग आवर ड्यूटी 100%, बिकॉज सिर्फ हम लोगों के हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा. अगर फॉर एग्जांपल आप सर्जन हैं, आपके टूल्स ठीक नहीं है, अगर आप टूल्स 100 साल पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कभी भी ठीक ऑपरेट नहीं कर सकेंगे. लेकिन अगर आप लेजर सर्जरी से कर रहे हैं, अगर आप नए आलात से कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपका वो जो डिलीवरी है और आपकी जो सर्जरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. बट आई थिंक दिस आई वुड लीव एज अ सॉर्ट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर यू.
ताकि आप इसके बारे में सोचें, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कल आपने डिसाइड करना है. लाइक आई कीप ऑन सेइंग दैट यू आर द फ्यूचर लीडरशिप. आप डिसाइड करेंगे तो आपकी मीडिया प्रेजेंस भी हो जाएगी, जिस तरह मैडम ने कहा कि जो है ना कोई इस तरह का स्पोक्स पर्सन होना जरूरी है जो आपके बिहाफ पे कर सके. प्लस आई थिंक दैट यू नो इट इज नेवर अ गुड वे टू वर्क इन द शैडोज. जब आप शैडोज में काम करते हैं तो लोगों के लिए आपके बारे में गलत बात करना भी आसान हो जाता है, जनरलाइज करना भी आसान हो जाता है. हम कबूतर की तरह आंखें जरूर बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे जो विक्टिम है, जो बंदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, जो इसको हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, चाहे वो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, जब तक आप विक्टिम सेंट्रिक नहीं सोचते आपको सारा जो है ना वो हरा हरा ही नजर आता है. बट इफ यू रियली यू नो अप्रोच इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, तो इतने ज्यादा गेपिंग होल्स हैं, इतने बड़े फ्लॉज हैं कि एक विक्टिम को हमें कंधों पे उठा के साथ लीगल एडवाइस के साथ साथ एनजीओज के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हमें एक्सेप्शंस क्रिएट करके एक विक्टिम को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना पड़े, तो आई थिंक वी रियली नीड टू सी कि हमारा सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या फ्लॉज आ रहे हैं. मैडम सादिया, आप और भी कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाहती कि वाइल वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीइंग विद यू, आप ही की मिसाल से मैं कहूँगी, जैसे आपने सर्जन की बात की थी कि कभी भी कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी आप पब्लिक और कैमरा मीडिया के सामने नहीं कर सकेंगे. वो हमेशा ऑपरेशन टेबल पे एक सिक्योर माहौल में ही होगी. कुछ कामों के लिए रूटीन वर्क ठीक है और कुछ कामों के लिए हमें मीडिया की तरफ भी जाना चाहिए, मॉडर्नाइज भी होना चाहिए, चेंज भी करना चाहिए. मगर जुडिशरी लाइक वाइज सर्जरी ऐसी चीज है कि जिसके कुछ चीजें कभी तब्दील नहीं होंगी. उनको थोड़ा सा रूटीन में डालना पड़ेगा, जैसे कि देखिए जज की हम भी जब कोई प्राइवेसी तफ्तीश और कर आउट रहे ऑफ होते अप्रोच हैं तो रहना. वी कैन आल्सो एनीथिंग दैट इज यू नो सब जुडिस जो इवन अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके ऊपर हमारी भी रेगुलेटरी सारा फ्रेमवर्क ये कहता है कि यू कैन नॉट एडवाइस. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पीपल डू नॉट नो what judges you know are mandated to do, what they are carrying out, how is the dispensation of justice being carried out. ऐसा क्या है जो कि जो है वो मतलब पहले जो है वो सिस्टम में मौजूद नहीं था, and there have been changing in the system which have made the you know public service delivery better. I am just talking about that perspective. Otherwise I think कि जिस तरह if you want to be you know enigmatic and shrouded in mystery, that you already are as an organization. एज आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका तो श्राउडेड इन मिस्ट्री होने का, बिकॉज उनके कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उनके, तो इट मेक्स सेंस. इवन देन दे हैव यू नो सर्टेन इनफॉर्मल चैनल्स वेयर ऐसे नहीं होता कि देयर ऑपरेशंस डू नॉट गेट रिकग्नाइज्ड, पूरी दुनिया में ऐसे होता है. सो आई थिंक बट स्टिल मैं इसके ऊपर कोई फाइनल ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकती बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट माई डोमेन. बट आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ द सीजेएस, आई थिंक के सीजेएस तब तक कभी ग्रो नहीं कर सकेगा, अपनी चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकेगा जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमने पब्लिक को डिलीवर करना है और हम वन साइडेड खुद अपने आप को हम करते ये हैं कि हम आपस में बैठ के फैसले करते हैं, आपस में ही बैठ के हम उसके ऊपर एक दूसरे को समझते हैं कि जी इट शुड बी अप्रिशिएटेड, और हम आपस में ही तय कर लेते हैं कि वी आर ग्रोइंग. बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक है और जो लोग एक्सेस करें सीजेएस को, अगर वो किसी जगह रिप्रेजेंटेड नहीं है और उनके जो एस्पिरेशंस हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है अगर वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो आई थिंक वी मस्ट डू समथिंग. बट अगेन आई विल लीव इट एट देयर. तो ये हमने बात कर ली कि आपके रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, वर्बल भी हैं और प्रॉब्लली कुछ इन राइटिंग भी हैं. स्टेटस रिलेशन है, इफ यू थिंक दैट यू नो दिस डिस्कनेक्ट हेल्प्स यू नो एंड वर्क्स इन योर फेवर, तो आई थिंक इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड. कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह आई थिंक मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है प्रॉबेबली देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी परसीव्ड, जिसकी वजह से प्रॉबेबली यू वुड नॉट वांट टू गो आउट एंड मेक अ फुटप्रिंट ऑफ योर्स. तो आई थिंक दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट. अच्छा, अब जो हमारे पर्सनल बैरियर्स होते हैं, बाज़ औक़ात यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वे यू आर कम्युनिकेटिंग within your office, in your workplace, but sometimes आपके superiors की तरफ से जो है ना वो इतना encouraging behavior नहीं होता, और आपको ये भी होता है बाज़ औक़ात के if you would put forth a dynamic idea, तो it would be turned down because because आपके superior जो है वो authority में वो उसको करेंगे कि जी they would say कि जी आपको जब system एक तरीके से चल रहा है तो आपको चलने दें. Lack of time भी हो सकता है. You would want to aspire to bring about some changes in the way things are already working, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होगा. You are already so much invested in your day-to-day work कि वो जो है उसकी वजह से आप किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने में और कम्युनिकेशन को बेहतर करने में शायद टाइम ना निकाल पाए. इसी तरह लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकता है. दैट कुड आल्सो बी अ बैरियर, दैट यू डू नॉट नो के कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ऐसी चीज़ बेहतर की जा सकती है. इफ यू डू नॉट थिंक दैट कम्युनिकेशन
skills need much growth, then you would also think कि इसका कोई फायदा नहीं है जिस तरीके से हम अभी state of affairs है, if it is running fine, तो then it should be okay. Then barriers subordinates में भी हो सकते हैं. ये change dynamics हम तो अपने environment के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमारे discussion भी होती है, हमारे courses भी run होते हैं, and we talk about change dynamics. Change को हमेशा लोग resist करते हैं because everybody is always comfortable with the way things are happening. तो बाज़ औक़ात आप अपने मातहतों के लिए उनकी ही बेहतरी के लिए कोई चीज़ उनसे कम्युनिकेट करके बेहतर करना चाह रहे होते हैं, बट दे रेजिस्ट, और वो बैरियर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स की तरफ से भी आ रहे होते हैं. And then there is a lack of proper incentive as well. For example, I would just give a small example कि हम लोगों के जो है चैनल्स के अंदर आपने देखा होगा, हम पुलिस में हमारा सिस्टम एक कम्युनिकेशन में हमने फील किया कि हमारे पास कंप्लेनेंट जो हैं वो सारे के सारे नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज देयर इज एन ऑफिस, और ऑफिस के दरवाजे पे एक दरबान खड़ा हुआ है, उसने कहना है कि जी आप अंदर नहीं जा सकते. तो खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट कुछ अरसे से हमारा है, बट स्टिल हमने ये देखा है कि हमारे उस सिस्टम, हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उस सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं से गैप्स आते हैं, क्योंकि लोग जो उसके ऊपर जाते हैं खुली कचहरी के लिए भी, जब वो एक्सेस करते हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स. और उसके अंदर जो इंसेंटिव है मातहतों के लिए होता ये कि एक बंदा, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद माय ओन एग्जांपल, एंड आई एम श्योर कि आप अपने उस पे से एक्सपीरियंस पे से यू कैन ड्रॉ अपॉन इट, कि जो बंदा पहले आमतौर पर शिकायत लेके एसएचओ के पास जाया करता था, वो उसके बाद शिकायत अब ना एसएचओ के पास लेके जाता है, ना ही वो जाता है डीएसपी के पास, ना एसपी के पास. वो कोशिश करता है कि मैं हाईएस्ट जो ऑफिसर है, चाहे वो डीपीओ है, चाहे वो सीपीओ है, चाहे वो आईजी है, वो उसके पास चला जाता है. अब होता ये कि अप्रोप्रिएट लेवल पे जब काम जो है नहीं जा रहा, तो सारा वर्कलोड एक पे चला जाता है. सो नाउ दीज डेज वी आर थिंकिंग कि probably we need to incentivize both the complainants coming and approaching the police and also our subordinates, ताकि उनको ये ना लगे कि जी वो काम अब ऐसा चॉइस समझेगा कि जी ये तो कंप्लेनेंट मेरे पास, मेरे तो अच्छी बात है, दर्द सर मेरा खत्म हुआ तो सीधा ही डीपीओ या सीपीओ के पास चला जाएगा. So we need to always engage. Communication is always back and forth. ऐसे नहीं होता कि आपने ऑर्डर पास कर दिया नीचे या फाइल ऊपर भेज दी तो उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म होगी. आपने ये देखना होता है कि it is reaching its conclusive end or not. तो इसमें आप बताइए प्लीज कि आप लोगों से कोई रेलेवेंट है ये एग्जांपल कि आप लोगों को कोई यहाँ पर इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम आता हो इन द कंप्लेनेंट्स एक्सेसिंग द मेन चैनल्स. आपके कंप्लेनेंट्स को जनरली पता होता है कि दे नीड टू एक्सेस पर्टिकुलर, जी अजीज साहब, उनको पता होता है कि मैंने सिविल कोर्ट में जाना है, मैंने कौन सी क्रिमिनल कोर्ट में जाना है या कहाँ पर? दे यूजुअली नो. नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता. थाने की हद तक तो पता होता है हर किसी को कि जी हमारा थाना फलाना है, तो हमें थाने में जाके अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो इस तरह करनी है. कोर्ट्स के हवाले से कि ज्यूरिसडिक्शन का इशू होता है कि कौन सा थाना किस जज साहब के पास है, ये फिर एडवोकेट्स ज़्यादातर उनको गाइड करते हैं, या फिर हमारा स्टाफ होता है वो उनको बताता है कि जी हमारे पास फलाना थाना है, फलाना थाना उनके पास है, इस तरह होता है. बाकी एक्सेस अगर हमारे तक बात करें तो कोर्ट ओपन होती है वैसे ही, कोई भी लिटिगेंट आके एक्सेस कर सकता है कोर्ट में, और चैम्बर में भी हम लोग परमिट करते हैं. अगर चैम्बर में बैठे हुए हैं और अगर कोई मिलना चाह रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको परमिशन दे दें कि जी वो आए चैम्बर में भी मिल लें. ठीक है, तो मतलब कोई उसमें अगर कंफ्यूजन होती भी है तो इट गेट्स राइट अवे एड्रेस्ड. वो उनको कोई ना कोई गाइड करने के लिए उधर मौजूद होता है कि जी आपकी ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की बनती है और आपका जो मामला है वो इस कोर्ट का बनता है, तो आप उनको एक्सेस करें. जी जी बिल्कुल बिल्कुल गाइड कर देते हैं उनको. जी, तो the ways in which we can overcome barriers to communication is understand others see things differently to you. कि मतलब आप उसमें देखें कि अगर कोई communication barrier आपकी तरफ से आ रहा है या it is something that is coming from the side of your subordinates, your superiors, तो कोशिश करें कि अपना जो message है, whether it's related to the work or it is related to something that you want to create a shift in the system, a change in the system, तो आप देखिए कि कहाँ पर जो communication का challenge आ रहा है. You can always get a feedback from the receiver. अगर आप अपने colleagues के साथ कुछ share कर रहे हैं या अपने superiors के साथ, तो आप उसमें देखें कि उनके feedback से भी it will help you understand कि कहाँ पर communication gap है. It is always best to speak face to face. जितना ज़्यादा face to face बात करते हैं उसमें body language, non verbal आपकी जो body language expressions होते हैं, they help you understand कि जो communication है उसमें कहाँ पर बैरियर्स आ रहे हैं. तो इसलिए कोशिश आप हमेशा करें कि if you have to take up important matters with someone,
whether at your workplace or your personal life, it's better कि आप फोन पे या ईमेल या उस पे व्हाट्सएप पे बात करने की बजाय फेस टू फेस बात करने की कोशिश करें. That always creates a better impact. Or use a language that fits the audience. This is also necessary कि आप अगर ऐसे देखते हैं कि आपके जो फॉर एग्जाम्पल जब आप सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर आई अंडरस्टैंड कि सिंध में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी जो सिंधी लैंग्वेज है दैट इज़ इन यूज़ स्पेशली इन दी रूरल सेंटर्स. हमारे वहाँ पर जो पुलिस का काम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिंधी ज़ुबान में ही होता है. तो आप अगर इसलिए उनसे ऐसी ज़ुबान में बात करेंगे जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कोई इंग्लिश की जार्गन ऐसी यूज़ करेंगे या कोई ऐसे, इसी तरह आपके जब आप लिटिगेंट से बात कर रहे हैं तो उनसे भी आई एम श्योर कि जब आपको इफ़ यू हैव टू स्विच टू सम रीजनल लैंग्वेज या अगर कोई इस तरह के हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो सकते हैं, उनको अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आता होगा, तो आपने यू हैव टू यूज अ लैंग्वेज व्हिच बेटर स्टेट्स योर पर्पस. यूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल. दिस वी हैव सीन के फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्योंकि हमें अपनी हायरार्की में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू a superior over the phone. It is always better कि written communication में, for example, it's a leave, it's something else. तो आपने ये देखना है कि which communication channel suits it the best. Integrity और honesty होनी चाहिए आपकी communication में. That is usually something जो हम जब hierarchical setups में काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा we are hesitant कि अगर हम open और honest होके बात करेंगे तो it might be shot down. बट दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जब आप ऑनेस्टी से बात करते हैं, आप जब अपनी ट्रू ओपिनियन देते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में, तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी, हमारी अदर सोसाइटी की है टेंडेंसी ऑफ जस्ट अग्रीइंग एंड नॉडिंग अलोंग, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एफर्ट नहीं लगती. आमतौर पे आपके सुपीरियर्स कोई बात कर रहे थे तो आप कहते हैं हाँ जी ठीक है, वो जब आपसे कंसल्ट भी करते तो आप कहते हैं कि सर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है. तो उसमें आपको दो तरह का फायदा होता है कि एक तो ये होता है कि खुद अपना माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता, सेकेंडली ये होता है कि जी बॉस का भी होता है कि जी बॉस को कौन कॉन्ट्रडिक्ट करे. बट इट इज ऑलवेज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू ग्रो एज अ लीडर कि आपका जो पाथ है वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी तो गोज विदाउट सेइंग बिकॉज उसके बगैर आप फंक्शन नहीं कर सकते. लेकिन इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट इन योर ओपिनियंस, if you really think कि there is a certain decision being made and you are a part of the decision और आप अपनी opinion सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि it would draw the ire or the anger of your superiors, so you cannot really emerge as a leader. You would always remain a follower all throughout your life. It is also absolutely necessary that you make it easy for others to listen to you. आप ऐसे टोन में बात करें, ऐसी जुबान में बात करें, ऐसे क्लैरिटी से बात करें कि लोगों को आपकी बात समझ आए. इसमें जब आप कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल करें, उसमें कोशिश करें कि डिफरेंसेस जो परसेप्शन के हैं, आपका एंड एम ये होना चाहिए कि उसके अंदर डिफरेंसेस को एलिमिनेट किया जाए. यू टॉक इट आउट अंटिल द टाइम दैट यू सी कि यू आर ऑन द सेम पेज. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें. नॉइज़ को कोशिश करें कि किसी भी तरह का जो है ना वो एक्सटर्नल नॉइज़ भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे यू आर talking in a group, तो a lot of people are contributing, more are talking and less are listening, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है. एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. जब आप खुद सुने तो अच्छे तरीके से सुने और फिर एक्सपेक्ट करें दूसरे बंदे को भी ये बताएं कि जी जब व्हेन आई विल बी टॉकिंग तो आई एक्सपेक्ट कि आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे. ऐसे नहीं कि यू आर जस्ट नॉडिंग अलोंग क्योंकि आपको कुछ कंट्रीब्यूट ना करना पड़े. इमोशनल स्टेट को आपको देखना चाहिए कि इमोशंस शुड नॉट रन वेरी हाई बिकॉज आपकी लीडरशिप में दिस मैटर्स अ लॉट कि आप देखिए कि आपकी अपनी इमोशनल स्टेट क्या है और अगले बंदे की इमोशनल स्टेट क्या है. अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. जितनी रिक्वायरमेंट है बात शेयर करने की उतनी ही आप डिटेल्स में जाएं. अगर आप समझते हैं कि एक बात 2 जुमलों में मुकम्मल हो सकती है तो उनको 2 जुमलों तक महसूस रखें. इसी तरह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें, ज़रूर लोगों से पूछें बिकॉज इफ यू आर इन अ लीडरशिप इन अथॉरिटेटिव पोजीशन अल्टीमेटली यू आर द फाइनल वर्ड ऑन इट. लेकिन फीडबैक से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है और होराइजन ब्रॉड हो जाता है और उससे आपका जो डिसीजन है इट बिकम्स मोर इंक्लूसिव. प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन. अगर आप समझते हैं कि एक प्रेजेंटेशन के ऊपर वो आपकी बात अच्छे तरीके से हो सकती है तो उसके ऊपर दे दें. अगर आप समझते हैं कि फेस टू फेस हो सकती है सो यू आर द बेस्ट जज कि आप देखें कि उसके लिए कौन सा मीडियम सबसे अप्रोप्रिएट होगा. देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग द टारगेट्स. कि जब आप अपने कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं सुपीरियर्स के साथ और सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो ये देखें कि उसके अंदर अपना फ्लेक्सिबल मार्जिन रखें. हमारे वर्क एनवायरनमेंट में आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे होता है कि अगर आपके सीनियर्स में से किसी ने कह दिया कि जी ये फलानी तारीख तक आप कर लें मुकम्मल, तो हम में से कोई डिसएग्री नहीं करता है. अगर वो कह देते हैं और वो बड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट होता है तो हम तब भी कह देते हैं घबरा के कि ताकि सीनियर माइंड ना करे, हमें इनकॉम्पिटेंट ना समझे, तो हम कह देते हैं जी सर हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग.
बेसिकली आपको जो है, अगर आप समझते हैं कि वो काम 2 दिन में आपको करने के लिए कह रहे हैं और वो 4 दिन में होने वाला है, तो आप उनको कहें कि सर आई विल सबमिट, if there is no urgency, then this work requires proper attention, and it would be, to my estimate, it can be done in 4 days and not before that. I can always do it in 2 days, but अगर आप उससे पहले जब 2 दिन में मुझसे करवाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होगी. Do you do that? अगर आप लोग को काम कोई आता है तो आप लोग इस तरह से कोई उनके साथ करते हैं? Do you negotiate? Otherwise I will have to presume कि आप लोग को जो डेडलाइंस मिलती हैं आप लोग उन डेडलाइंस को उसी तरीके से फॉलो करते हैं, which is really bad for your resilience. I see आप लोग तो बहुत ज़्यादा कंफॉर्मिस्ट हैं इस लिहाज से, जो कोई आपको डेडलाइन दे देते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे टाइम्स पे तो बड़ी अनरियलिस्टिक पे होती हैं. चलें कोशिश करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया कभी करके देखें, कभी कोई बॉस माइंड नहीं करता, दे रादर अप्रिशिएटेड कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट. जी अजीज साहब. मैडम हमारी इस तरह के कोई वो शॉर्ट टर्म हमें नहीं मिलते प्रोजेक्ट्स वगैरह जिनको किसी एक टाइम में करके देना होता है. सिंपली हमारा काम यही होता है कि केसेस आते हैं, उन केसेस को चलाना है और जितना जल्दी हो सके उनको डिस्पोज ऑफ करना है. बस हमसे कुछ रिपोर्ट्स ली जाती हैं जो हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन होती है कि जी ये आज सबमिट कर दें या कल सबमिट कर दें. वो कोई इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करती जिसमें हम इतना नेगोशिएट करें या ना बन सकें रिपोर्ट. अच्छा, लेकिन आई स्टिल थिंक जिस तरह हमें पता है कि हमारा रिमांड का टाइम मतलब 14 दिन है, चलान का टाइम है, जो कि अभी ये जो नए रिफॉर्म्स हुए वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए कि उसको 45 डेज तक ले गए हैं. तो आप लोगों के पास इसका मतलब है कि यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि केसेस पे बहुत काम हुआ है कि अलग अलग ट्रैक्स बनाए गए हैं कि जी ये स्पीडी जस्टिस पे जाएंगे, ये स्पेशल कोर्ट्स पे जाएंगे. तो इसलिए प्लीज मतलब इट इज़ फॉर माई ओन लर्निंग एंड नॉलेज, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ. जी सर गुलाम साहब आप कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं हमारे पास भी, जैसे रेंट केसेस को हमारे पास डायरेक्शन है कि विद इन 4 मंथ्स हमने डिसाइड करना मोस्टली हो. तो इसी तरह हमसे ये हर मंथ की 15 डेज पर रिपोर्ट भी कॉल की जाती है कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ दैट केस. तो वो ये चेक होता है हाई कोर्ट का कि कुछ इसी तरह कुछ डायरेक्शन केसेस होते हैं हाई कोर्ट से डायरेक्शन होती है कि विद इन 30 डेज डिसाइड करें, विद इन 6 मंथ्स डिसाइड कर दें. इसके बाद कुछ ओल्डेस्ट कैटेगरी के केसेस होते हैं जब हमारे एनुअल इंस्पेक्शन यूजुअली होती तो नहीं है लेकिन फॉर्मेलिटी तो है, उसके अंदर हमें डायरेक्शन दी जाती है कि ओल्डेस्ट कैटेगरी विद इन 6 मंथ्स डिसाइड कर दें. ये कोई टारगेट्स होते हैं, वो होते हैं कि बाद फ्लेक्सिबल भी होते हैं, वो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है. ठीक है जी. मैडम आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अब तो एमसीटीसी कोर्ट्स बन गई हैं, तो उसमें तो बड़ा जल्दी काम होता है और डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलती हैं. इवन काम सस्पेंडेड होता है. एमसीटीसी कोर्ट्स जो मॉडल कोर्ट्स बनी है जस्टिस चीफ जस्टिस खोसा साहब ने जो बनाई थी, तो वो तो हैं ही स्पीडी ट्रायल्स के लिए. और वो कुछ जो है वो काम जो है वो कुछ पर्टिकुलर कोर्टों को वो डिजिग्नेट कर दिया है, और वो उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स भी होती रहती हैं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के साथ, और उनकी बैक टू बैक रिपोर्ट्स भी जारी होती हैं, और वो है ही फास्ट पेस्ड कोर्ट्स हमारी. जी बिल्कुल. मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि खोसा साहब के बाद कुछ मॉडल कोर्ट्स बनी है जिसके अंदर probably इस तरह से, बट अगेन आई वुड से कि यू आर द बेस्ट जज कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज बर्डनसम. तो आई थिंक कि फिर तो इट इज अ विन विन सिचुएशन. जो दे रहे हैं काम उनको भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा और जिनके पास आ रहा है तो आई एम श्योर कि इट्स अ गुड अरेंजमेंट. अब जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो दीज आर वेरी सिंपल फिनोमिनन्स, बट आई थिंक आज आपके वो सीज पहले काफी सारे उधर भी कवर हुए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो दीज आर अ फ्यू 7 सीज जो कि आप व्हेन यू आर टॉकिंग तो इसको जरूर देखिएगा. एंड इफ यू वांट टू मेक एनी नोट्स ऑफ दीज थिंग्स, दीज कम इन वेरी हैंडी. कि आपकी कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी और करेक्टनेस. जब ये 6-7 चीज जो है आप इनको मरूज़ खातिर रखते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई ऐसा लूप होल नहीं रह जाता, ऐसा गैप नहीं रह जाता जिसके अंदर व्हेन यू सी योरसेल्फ एज फ्यूचर लीडर्स. तो कोशिश कीजिए कि जब आपकी कम्युनिकेशन है, अगर आप कोई रिटन स्पीच कर रहे हैं, आपका कोई रिटन फॉर्मल, आई एम श्योर कि आपके एड्रेसेस होते होंगे, जब आपके कोई फंक्शंस होते होंगे, आपके कोई जुडिशियल एकेडमी के फंक्शंस होते होंगे, अदरवाइज आपको कोई लेक्चर्स के लिए बुलाता होगा, तो आप ये देखिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए. वी विल ब्रीफली टच अपॉन, नेक्स्ट पे जाइए कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज. कंप्लीटनेस इज के आपकी टू बी द इंफॉर्मेशन टू बी कंप्लीट, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन दें. आपकी जितने मतहतों के लिए हो गया, सुपीरियर्स को आप प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं अपने, तो उसके अंदर जितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी उतना आपका जो मैसेज है वो कंप्लीटली अक्रॉस हो जाएगा. द सेंडर मस्ट नो द रिसीवर्स माइंडसेट. उनको ये पता होना चाहिए
क्या आप एक डे टू डे ब्रीफिंग दे रहे हैं या इट इज समथिंग एल्स दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव विद इट। कंप्लीट कम्युनिकेशन एनहांसेस द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज़्यादा आपका मैसेज जो है वो पुट अक्रॉस होगा करेक्टली, उतना ज़्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर होगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स, इट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ आपको लगे कि जी बात जो है कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स भी देने पड़ रहे हैं, वहाँ पर यू मस्ट ऐड दैट। इट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव द एग्जाम्पल, यू गो टू अ डॉक्टर, देयर इज अ पेशेंट, उसका डायग्नोसिस हुआ है। अब उसके डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर ये कहता है कि जी सर्जरी होगी, लेकिन आपको इस बात का पता है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को जाके कंसल्ट करते हैं तो वो आपको कहता है कि जी इसमें सर्जरी इज अ वे आउट, बट आई कैन सजेस्ट कि आप इसके अंदर कुछ अर्से ये मेडिसिन यूज करते हैं और फिर हम आपके एक बार फिर टेस्ट करेंगे, देन वी विल सी कि आपको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। एक और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो आपके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये इस तरह की चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर और आपका शुगर लेवल और ये सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिसिन भी यूज़ ना करें, यू वेट इट आउट, आप अपने थोड़ा सा डाइट के अंदर चेंजेस करें, आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, तो आपका ये बेहतर हो जाएगा और आप 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट करा लें। सो व्हेन यू डू दीज थिंग्स, सो यू आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब अगर आप सर्जरी का डिसीजन करते हैं, मेडिसिन का करते हैं, एक्सरसाइज का करते हैं, यू आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज आपको पता है कि ये मेरे पास 3 रास्ते मौजूद है। लेकिन अगर आप पहले जो डॉक्टर के पास गए उसने आपको आपने सर्जरी ही करवा ली, देन प्रोबेबली यू मिस्ड आउट ऑन एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है व्हेन यू आर एक्सेसिंग, आप अपने जब कोर्ट के उसके अंदर भी कर रहे होते हैं ट्रायल्स, जो केसेस यू आर यू नो हियरिंग इन द कोर्ट्स, तो आपके पास आपको भी ये फील होता होगा कि जितनी ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इसीलिए इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट व्हेन यू आर मेकिंग some communication towards your superiors, तो उनको आप complete information दें ताकि उनकी बेहतर decision making हो। It also persuades the audience। अगर आप उनको पूरी बात बताएंगे तो वो ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे कि इस बंदे ने हमें ऑनेस्टी से सारी बात बताई है, तो इसलिए वो फिर आपको जो है दे थिंक दैट यू आर ऑथेंटिक और वो जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। कंसाइसनेस के साथ भी आपको बात अपनी कम्युनिकेशन के अंदर लानी इसलिए पड़ती है बिकॉज यू नो लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जितना आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको ब्रीफ रखेंगे, उसको टू द पॉइंट रखेंगे, उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन के अंदर एम्बिग्विटी नहीं आएगी। इसी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक असूल है कि आप उसको यू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर आपका जो कंसाइज मैसेज होगा वो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव होगा तो वो ज़्यादा आपकी ऑडियंस के ऊपर असरअंदाज भी होगा। इट शुड ऑल्सो बी नॉन रेपिटेटिव, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं होगा। कंसिडरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन कम्युनिकेशन के इसके अंदर आपने ये देखना है कि जो ऑडियंस से आप बात करें उनके व्यू पॉइंट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है। यू मस्ट कंसिडर हु यू आर टॉकिंग टू। फिर ये स्टेपिंग एम्पैथी की हमने बात की है कि स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, तो जब आप कम्युनिकेट करें तो एम्पैथेटिक होकर कम्युनिकेट करें। कंसिडरेशन आल्सो इंश्योर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन एंड देयर इमोशंस आर नॉट हार्म। तो आपका बात जो आपकी बात ज़्यादा अपील करेगी आपके ऑडियंस को व्हेन यू आर कंसिडरिंग देयर माइंडसेट एंड फीलिंग्स। ऑल्सो द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडियंस, ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती है कि जिससे आप बात करें, आप बच्चे से बात करें, आप बड़े से। आई एम श्योर कि जब आपके पास केसेस कोर्ट्स में, खासतौर पर फैमिली कोर्ट्स में कस्टडी के चल रहे होते हैं, तो जब आपने बच्चों से पूछना होता है एंड चिल्ड्रन हु हैव विटनेस्ड एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट टू द फीमेल जजेस, कि बच्चों से आपने देखना होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और बच्चे जो है वो आमतौर पे दे विटनेस देयर मदर्स बीइंग बीटन अप। तो जब आप उनसे पूछते हैं तो चिल्ड्रन दे डू नॉट वांट टू बी रॉन्ग आइदर विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स। वो कोशिश करते हैं कि ये वो ऐसे ना लगे कि जैसे वो फादर के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, उनको ऐसे ना लगे कि माँ को सही तरीके से साइड नहीं ले रहे। सो यू नो यू हैव टू सी who your audience is and in what capacity are you dealing with them, तो उससे जो है आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। नेक्स्ट, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन क्लैरिटी इज ऑल्सो ओवरलैप्स विद कंसाइसनेस, कि आपका स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ यू आर एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो जस्ट स्टिक टू द पर्पस एंड डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक। क्लैरिटी जो है उससे अगले बंदे को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है। इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट और आइडियाज जो होती है उससे आपका जो इट कैन नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड। क्लैरिटी इसलिए होनी चाहिए ताकि उसकी कोई दूसरी डायमेंशन या कोई और इंटरप्रिटेशन ना अगला बंदा निकाल सके। Clarity comes with the use of exact, appropriate and concrete words. This you should be mindful. Next.
कॉन्क्रीटनेस ये होती है कि आप पर्टिकुलर हों और जनरल तरीके से बात ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ये कहना चाह रहे हैं कि जी कल से सब लोग ने वक्त पे आना है, और कुछ लोग वक्त पे आते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वक्त पे नहीं कोर्ट में पहुंचते, या जिन लोगों ने प्रेजेंट करना होता है विटनेसेस को वो ठीक तरीके से सही टाइम पर प्रेजेंट नहीं उनको करते, तो आप उनको बताएं, बी वेरी ब्रीफ एंड डू नॉट बी जनरल। आप ऐसे ना बताएं कि जी वक्त की अहमियत के ऊपर उनको पहले एक लंबा सा लेक्चर दे और उनको बताएं कि जी अगर कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता कि अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे। उनको आप एक सिंपल बात करें कि जी वक्त की पाबंदी आप करें, एंड दैट इज रिटन एंड वर्बल ऑर्डर, इसको कल से आप सब एक्सरसाइज करना है। उससे ये होता है कि कोई एम्बिग्युइटी नहीं रह जाती। It also shows good level of confidence. If you beat about the bush, और अगर आप बहुत इधर उधर की बातें पहले करके and you come to the point, तो लोग ये समझते हैं कि आपका confidence level इतना अच्छा नहीं है, you are not very sure of yourself. Then it also helps to strengthen the reputation of the organization. Again, I would say कि जितना आप अपने clarity होती है, concrete होता है आपका message, उतना आपको लोग ऑथेंटिक समझते हैं। इसी तरह कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एग्जैक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसको कोई मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता और कोई कंफ्यूजन या कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, courtesy is probably last but not the least, because courtesy takes you a whole long way. It is said that courtesy costs you nothing but pays you a lot. तो courtesy आप कोशिश करें कि चाहे आप कॉलीग से बात कर रहे हैं, आप सुपीरियर से बात कर रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, courtesy का दामन हाथ से ना छोड़ें। Always try to be polite, kind, judicious, enthusiastic, convincing, and above all assertive. अब this is a problem which I would particularly like to address when it comes to female officers in any profession. जो females काम कर रही होती हैं, they are generally polite, they are generally kind, but it is misinterpreted. इसको ऐसे लगता है कि that you are not assertive, और अगर वो थोड़ा सा अगर assertive होके बात करें तो it is misperceived generally by everyone to be that they are bossy. तो इसलिए ये क्योंकि हमारे अगेन यहाँ पर ये जेंडर्ड जो हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं। इसलिए फॉर वुमेन लीडर्स एंड फॉर वुमेन टू बी फ्यूचर लीडर्स, दे मस्ट सी कि कर्टसी को ज़रूर वो जो है अपने कम्युनिकेशन के अंदर रखें, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट द इमेज और द परसेप्शन शुड नॉट बी दैट ये किसी वीकनेस के सेंस में परसीव नहीं होना चाहिए। So you must always be assertive, no matter how many times you are told that being assertive, you probably sounded a little bossy. That's not bossy. That's something कि हमारे society के अंदर women are not expected to be assertive. अगर इसके ऊपर किसी का कोई comment है, खासतौर पे female judges में से, तो I would really like to see their what their observation into day-to-day life is. Yes, so we also talked about correctness, that correct information is conveyed through your message. You should use the appropriate and correct language and precision and accurateness of facts and figures. Next पे जाइएगा। अब हमने C's सारे cover कर लिए हैं, and we have already talked about the verbal communication, what to say, how to say, whom to say, when to say. ये हमने जब कल verbal और non-verbal हम कर रहे थे, तो उसके अंदर these things should be kept in mind. Next पे जाइए। ये हमने पहले बात कल भी की थी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। यू एम्पैथाइज एंड यू नो हाउ टू रीड नो वर्बल कम्युनिकेशन जो है, लिसनिंग स्किल्स को आप बेहतर कर सकते हैं। टू द पॉइंट की हमने बात करी। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि इफ यू आस्क अ यस नो क्वेश्चन, दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप लोगों से पूछे कि जी आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग डिसएग्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक पॉइंट दे, आप उनसे पूछे कि जी मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आप बताएं कि आप क्या इम्प्रूवमेंट सोचते हैं। तो कोशिश करें कि अपने क्वेश्चंस को येस नो क्वेश्चंस के डोमेन में से निकाल के ओपन एंडेड क्वेश्चंस की डोमेन में लेके जाएं। टेल पीपल व्हाट यू कैन डू रादर देन व्हाट यू कैन नॉट डू। तो एम्फेसाइज करें कि जिस चीज़ के ऊपर आप बात करें, आप बताएं कि क्या हम कर सकते हैं, रादर देन टॉकिंग अबाउट कि क्या हम नहीं कर सकते। If you do not have something nice to say, then do not say anything at all. It is always better कि आप जो है वो politeness और उसके out of respect, अगर आपको लगता है कि there is nothing to add, तो you can keep quiet and you can choose to keep quiet. Next, I think this is the end, because कल हमने एक exercise भी इसके अंदर इनको दे दी थी जो इनकी asynchronous work था। So if there is any question related to this communication skills module, we can talk about it. Otherwise, we can move to the next peer networking module. Okay, so the next module that we are starting in a bit, that talks about peer networking.
लीडरशिप में हमने जो important or essential components that we have identified, one of them is peer networking. Now peer networking is a very important phenomenon in leadership these days, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए it is essential for you as future leaders to know about peer networking as well. कोई आप में से बता सकते हैं कि what is peer networking? Just an idea, not necessarily कि आपको पता ही हो, क्योंकि नाम से भी कुछ जो है वो इट इज़ अ लिटिल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो आप बता सकते हैं कि इसमें peer networking से क्या मुराद हो सकती है? ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए शायद ये नई टर्म है peer networking. आगे हम जाके देखेंगे कि talks about how within an organization you can network with other people to create an effective and impactful leadership. नेक्स्ट पे जाइएगा. पहले हम नेटवर्किंग की बात करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज द बिल्डिंग एंड नर्चरिंग ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स टू क्रिएट अ सिस्टम और चेन ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट. नेटवर्किंग अदरवाइज आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ी नॉर्मल टर्म है. जब तक लोग नेटवर्क नहीं करते तो दे थिंक देयर बिजनेसेस कैन नॉट फ्लरिश. पब्लिक सेक्टर में नेटवर्किंग को एक बहुत नेगेटिव वर्ड के तौर पे इसलिए देखा जाता है बिकॉज हम ये समझते हैं कि हम तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वी डू नॉट नीड एनी नेटवर्किंग, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट नहीं होती. और जब अभी हम पेयर नेटवर्किंग की बात करेंगे, दिस नेटवर्किंग इज बेसिकली फॉर योर प्रोफेशनल गोल्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. तो जो लोग नेटवर्किंग की तरफ नहीं जाते आमतौर पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाती हैं, और जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं दे डू नॉट गेट एनी रिप्रेजेंटेशन. मैडम फाइमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं यहाँ ऐड ये करना चाह रही, जो मैं समझती हूँ, जो मतलब मैं जब क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे थे प्री ट्रेनिंग जो हमारा वो सर्वे था वो हम सॉल्व कर रहे थे फॉर्म, तो उसमें भी कुछ मेंशन किया था. तो उसमें ये अगर लेट्स सपोज एक ग्रुप हो जिसमें तमाम मेंबर्स की एज इक्वल हो या स्टेटस या उनका इंटरेस्ट वगैरह, तो जो मैं समझ रही थी उस वक्त भी जब सॉल्व करते तो आई थिंक ये शायद पीर नेटवर्किंग या काइंड ऑफ ग्रुप के उनमें ये I सब think चीजें. you are आई डोंट very नो. हाँ जी, you are very near to the actual definition of networking. ये काफी उसकी काफी हद तक स्पिरिट ये भी है. This is one of the major components जो आपने इंडिकेट किया है. नेक्स्ट पे जाइएगा. Successful networking requires an attitude of giving advice, information and help rather than expecting this from others. अच्छा, अब नेटवर्किंग जो होती है अगर आप ना करें तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं होती तो आपको उसकी कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जब आपको नेटवर्किंग के बारे में पता चलता है तो आपको पता चलता है कि देयर वाज अ ह्यूज चंक फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ दैट वाज मिसिंग. क्योंकि आपकी, मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि एज ए लीडर जो आपकी ग्रोथ होती है वो सिर्फ वर्टिकल नहीं होती. आपने सिर्फ ग्रेड 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 इस तरीके से नहीं लीनियर और वर्टिकली मूव करना होता, आपने हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करना होता है. अगर आप हॉरिजॉन्टली ग्रो ना करें तो आप खुद अपने प्रोफेशन में भी देखें कितने चीफ जस्टिस आए और चले गए, लेकिन द वंस हु वर ट्रेल ब्लेजर्स इन देयर फील्ड, हु हैड एन इम्पैक्ट इन देयर ओन पर्टिकुलर फील्ड्स, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स थे या वो द सुप्रीम कोर्ट थे, हर बंदा 5 उंगलियां एक जैसी इसीलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करते. आप you can always choose to just spend the day at your workplace, be a normal ordinary person and go back and lead your life like an average person and leave the world as an average person. But if you think that you are a leader तो फिर आपको हॉरिजॉन्टली ग्रो करने की जरूरत पड़ती है. तो जो नेटवर्किंग होती है उसमें होता ये कि लोग एक दूसरे के साथ एडवाइस शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं रादर देन सीकिंग आउट के जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन होती है. अगर आप किसी मुसीबत में भी होते हैं पर्सनल लाइफ में तो हम ये अपने रिलेटिव से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको तो पता ही होना चाहिए कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम नॉट फीलिंग प्रॉबेबली आई एम फीलिंग डाउन और मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो मुझे हेल्प करना ही चाहिए. ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड network which helps you in determining the different sorts of advice and information. इसके आगे हम जाके आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे. नेक्स्ट पे जाइए. Effective networking usually occurs between 2 or more people who build rapport by finding common interests through meaningful, balanced, two-way communication. तो नेटवर्किंग तभी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता कि ये वन वे ट्रैफिक हो. नेटवर्किंग दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान तब होती है जब उनके पास दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन भी फ्लो करने के इक्वल चांसेस हो और उनके एक दूसरे को लिसनिंग और कम्युनिकेटिंग के भी इक्वल चांसेस हो. नेक्स्ट पे जाइए. अच्छा, नेटवर्किंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकर्स बिकॉज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनके चैलेंजेस होते हैं. I would like to now draw upon my own again experience.
of we have a women police network in Pakistan. और विमेन पुलिस नेटवर्क का आइडिया हमें यहाँ से आया कि हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो विमेन पुलिस है वो अपने अपने मुल्कों में यूएस की पुलिस का एक अपने हर स्टेट के अंदर नेटवर्क है, यूके के अंदर उनका एक नेटवर्क है, और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ 160 कंट्रीज देयर इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस। अब ये सारे मिलके करते क्या है, दे हैव अ क्लियर objective, and that is to recognize the efforts, the challenges and the problems, and share the same experiences of all the women police officers. अब उससे होता क्या है कि आई वुड फील, अभी जिस तरह मैंने डॉक्टर मरियम को भी इनवाइट करने का मकसद ये था कि आई कुड हैव इनवाइटेड अ मेल साइकाइट्रिस्ट, लेकिन मैंने फीमेल साइकाइट्रिस्ट को इसलिए किया बिकॉज अभी देखा उसने डे टू डे लाइफ की एग्जांपल भी वही दी कि जी बच्चे हैं, घर है, वर्क प्लेस है, तो द फीमेल जजेस कैन आइडेंटिफाई। द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग कि हमारा विमेन पुलिस नेटवर्क है, उसकी भी वजह ये कि वी थॉट कि विद इन द बिगर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो शेयर्ड गोल्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं related to our family, raising children, going to maternity leaves, and then getting posted at different places, वो recognize नहीं हो रहे। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर वो इस प्रेमिस के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं, द पीपल आइडेंटिफाई कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर बीइंग ओवरलुक्ड, या तो हमें इग्नोर किया जा रहा है या ये फील ही नहीं किया जा रहा है कि हमारी कोई स्पेशल नीड्स है। नो, पीपल कैन ऑलवेज हैव स्पेशल नीड्स। तो ये जो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, then they go and identify an aim and objective and they form a network. अब मैंने आपसे विमेन पुलिस नेटवर्क की बात की है, लेकिन पुलिस के पाकिस्तान के अंदर और भी नेटवर्क्स मौजूद हैं। आई एम श्योर कि अगर आप लोगों को किसी जुडिशल नेटवर्क का पता है तो आप मुझे बताएंगे, बट पाकिस्तान के अंदर हमारी पुलिस सर्विस और पाकिस्तान की एक एसोसिएशन है जिसके अंदर सारे जो लोग CSS करके पुलिस को ज्वाइन करते हैं, वो उसकी एक एसोसिएशन है। उसका एक लार्जर गोल और ऑब्जेक्टिव ये है कि पुलिस की रिप्रेजेंटेशन विद इन द ब्यूरोक्रेसी, एक तो पूरे सिविल सर्वेंट्स हैं, 11 इदारे हैं, वो इदारे मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर पुलिस फ्रंट के पुलिस की अपनी एक प्रेजेंस होनी चाहिए। इसी तरह वी हैव एन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड IGs ऑफ पुलिस। आई डोंट नो आपके कोई रिटायर्ड जस्टिसेस ऑफ जुडिशरी की कोई एसोसिएशन है कि नहीं। उससे होता ही है कि मुल्क में कोई किसी तरह का क्राइसिस होता है, मुल्क में कोई सिचुएशन होती है, तो ये लोग अपने अपने जो नेटवर्क्स होते हैं ये अपने उसके ऊपर व्यूज जनरेट करते हैं। जहाँ रिफॉर्म्स की बात आती है, जो हमारी रिटायर्ड IGs की जो एसोसिएशन है, उन्होंने पिछले अरसे में काफ़ी अरसे में पुलिस रिफॉर्म्स पे बहुत काम किया है। जस्टिस कोसा के साथ जो उनकी हमारी पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी है, उन्होंने काम किया है। अ लॉट ऑफ पीपल वर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम दैट एसोसिएशन। तो बेसिकली ये एसोसिएशन या नेटवर्क जो होता है, इट इज़ नॉट लाइक अ यूनियन। हालांकि यूनियन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का होता है, लेकिन नेटवर्किंग इज बेसिकली जहाँ आपको लग रहा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इग्नोर हो रही हैं, गवर्नमेंट उनको करिए इग्नोर, या एट द लार्जर पर्सपेक्टिव और जो पूरा लैंडस्केप आपका नेशनल लेवल पे, उसके ऊपर सर्टेन थिंग्स आर नॉट बीइंग डिपिक्टेड और वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो आप उसके लिए नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्क बेसिकली बनता है शेयर्ड गोल्स के साथ, कॉमन चैलेंजेस के साथ और सेम एक्सपीरियंस के साथ। फिर आप एक ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें ये लोग होंगे। अब फॉर एग्जांपल अब हम विमेन पुलिस नेटवर्क में आगे फर्दर हम फ्यूचरिस्टिक जब उसमें जा रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक तो वो लोग हैं जो CSS करके ऑफिसर्स लेवल पर ज्वाइन करते हैं। अब उनके गोल, चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस फर्क हैं फ्रॉम द वंस जो कि कांस्टेबल रैंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सोल्जर रैंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि तफ्तीशी रैंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम विद इन दैट वी आर ट्राइंग कि हम उनकी सेग्रीगेशन करके उनके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की कोशिश करें। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर आप लोग का कोई ऑलरेडी women judges network nahi hai, I would really encourage that you create a legal foundation for that, like we did for ours, and then you go for a network, because networks help you immensely with coaching, mentoring and experience sharing, and then getting international exposure. अब ये नेटवर्किंग जो आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द विमेन पुलिस नेटवर्क बिकॉज आई एम द सीनियर मोस्ट इन द कंट्री। तो अब उसमें होता ये है कि नाउ वी एक्सेस all the IGs in the provinces, all the DGs, DGFIA, DGIB, हमारे जितने पुलिस के इदारे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि जी ये हमारा आउटकम है मीटिंग्स का, ये उसके अंदर डिसीजंस हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप मैटरनिटी लीव के ऊपर ये डिसीजंस लें, आप जेंडर बजटिंग के ऊपर ये डिसीजंस लें, आप खवातीन की पोस्टिंग के ऊपर ये डिसीजंस लें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके जो रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि वो आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना दे, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हैं, कोई मेज कुर्सी ऐसा पड़ा है, कोई कंप्यूटर ऐसा पड़ा है जो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन दे वुड यूज इट टू द एडवांटेज ऑफ द पीपल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी जब तक आपने हमें नहीं बताया, वी नेवर रिकॉग्नाइज कि खवातीन की कोई स्पेशल नीड्स भी हो सकती हैं,
वी ऑलवेज प्रिज्यूम कि अगर इफ दे ऑलवेज मेक इट टू देयर वर्क प्लेसेस, जो खवातीन दफ्तर आ जाती हैं तो ऑटो पे उनका घर चलता रहता है. वी टोल्ड देम कि ऑटो पे कोई घर नहीं चलता, यू रियली हैव टू मेक इट पॉसिबल. एंड एवरी डे आई बिलीव it must be true for all the judges, female judges sitting here, कि every day is a miracle that you make it to your workplace, because आप घर के पहले सारे जितने पेंडोरा बॉक्सेस हैं उनको आप पहले बंद करते हैं, and all that circus that is happening आप उसको एक तरीके से ऑर्डर में शेप में देते हैं, तो you make it to your workplace. And once you go back again, all those challenges are waiting you, and then you are able to address them, because आपने पूरी अपनी कोशिश और एफर्ट से उसको एक ordered manner में मेंटेन किया होता है. So it helps you expand your thoughts and ideas. आप जब बाकी फीमेल जजेस के साथ करेंगी तो आप you will see कि you will find more similarities and differences. यही अगर नेटवर्किंग आप कहीं मेल जजेस के साथ करें, which I think also is necessary, because अभी हमने अपने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे अपने मेल सीनियर्स को, कॉलीग्स को इसलिए डाला है because it is more inclusive and it gives your network more authenticity, it gives more perspective to the networking. तो ये आपकी इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब तक आपके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं होते तो ऑब्वियसली जब पता ही नहीं चलेगा एक प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता. इट आल्सो हेल्प्स यू गेटिंग प्रमोटेड टू पोजीशंस. अब आई डोंट नो कि वेदर यू आर एट लिबर्टी टू से दिस और नॉट. मुझे तो पता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड जस्टिस आयशा मलिक मेकिंग इट टू द सुप्रीम कोर्ट. मुझे तो अच्छे तरीके से पता है, बट वुड यू लाइक टू से वाज इट एन ऑर्गेनाइजेशनल decision, या organizationally driven था या externally driven था? I think you are not at a liberty to say probably, but I must tell you, जी मैडम Faima. ये तो व्यू हो जाएगा. I think we won't discuss on it. अच्छा, लेकिन मैं I am stating a fact. This is a fact कि it was externally driven. The organization did not want it. So, but this is the matter. Again, as we grow higher in our ranks, probably in the future they would not want an IG. So it is absolutely the right time for me to start campaigning for a woman IG, because जब तक बनने की बारी आएगी, I cannot wait for anyone to do that for me and for the girls who are behind me. We must start agitating so that इससे पहले कि कोई external NGOs बताएं, आपको सिविल सोसाइटी बताए कि जी आपके पास फीमेल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी होनी चाहिए. I am all the time we get a lot of mentoring and coaching from Justice Maidar is a very active proponent and voice हमारे network के अंदर. Justice Nasra Iqbal, सारा टाइम हमारा उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ collaborations चल रही होती हैं, because we have created a space where women from all walks of life can come and identify with us. We have CEOs of multinational companies, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम सेम है. एक खातून के प्रॉब्लम हमेशा किसी दूसरे खातून से हमेशा नेयर रहेंगे rather than a male counterpart. तो इसलिए आई थिंक कि नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होती है. और मुझे आप लोग ज़रूर प्लीज़ बताइए, बिकॉज मुझे ये पता है कि जो जस्टिसेस हैं, देयर इज़ अ नेटवर्क फॉर यूरोपियन जजेस का एक नेटवर्क है. जुडिशरी के बहुत सारे नेटवर्क्स इंटरनेशनली तो एग्जिस्ट करते हैं. आप लोगों के कोई जुडिशल नेटवर्क्स ऐसे हैं जो नेशनली एग्जिस्ट करते हैं या प्रोविंशियली? कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस की एसोसिएशन और नेटवर्क, कोई जजेस की? अगर नहीं है तो जरूर पता कीजिए. आई डोंट नो किस बात का आप सबको पता भी नहीं होता. जी मैडम एना. मेरे ख्याल में सुना नहीं है कभी भी ऐसे कि ऐसे कोई नेटवर्क्स हों, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कभी सुनने में नहीं आया है. अगर उनके अपने कोई जैसे रिटायर्ड जस्टिसेस हैं, उनकी अपनी दोस्ती के उस पे अगर उन्होंने एक अपना कोई सॉर्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग का कोई ग्रुप बनाया हो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. लेकिन इस तरीके का जैसे कोई हो तो मतलब मुझे मेरा नहीं ख्याल. लेकिन डू यू अग्री कि इस तरह का होना चाहिए? बिकॉज मुझे इस बात का पता है कि बहुत सारे, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है ना वो बहुत सारे जुडिशल फोरम्स पे होती है. और आई थिंक कि आपके कोई डेपुटेशन पे भी जो है, आई थिंक सम ऑफ द जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दे गो एंड सर्व इन इंटरनेशनल. देयर इज दिस फोरम, आई एम जस्ट स्किपिंग माय माइंड. आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जाते हैं, प्रोबेबली सर्व करते हैं. तो ये होता ये कि ये नेटवर्किंग का फायदा ये होता है कि बाकी मुल्कों को भी पता होता है कि ऑन अ स्केल ऑफ डिफरेंट लाइक 170 और 180 कंट्रीज पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है जुडिशियल रिफॉर्म्स में, जुडिशियल प्रोसेसेस में. तो उसमें ये होता है कि आपके ग्रो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. तो अगर कोई नेटवर्क्स मौजूद नहीं है तो आपको बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस टू इट. आपको प्रोसेस में उस नेटवर्क को रिकग्नाइज कराना पड़ता है,
उसकी जो रैशनल है उसको रिकग्नाइज कराना पड़ता है। उसके जब आप लीगल फाउंडेशन बना लेते हैं तो नेटवर्क को आमतौर पे कोई भी सब लोग अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू अचीव कॉमन गोल्स। तो उसमें मतलब विमेन नेटवर्क भी हो सकता है, उसके अंदर कोई जजेस का नेटवर्क भी हो सकता है बिकॉज बहुत सारा अगर एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर आप केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं, रिसर्चेस शेयर कर सकते हैं, यू कैन जस्ट शेयर जहाँ पर आपको कोई जजमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है आप वहाँ पर एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं विदाउट गिविंग रेफरेंस टू पर्टिकुलर केसेस। तो डू यू थिंक कि डू यू अग्री कि आप लोग का भी कोई नेटवर्क होना चाहिए थ्योरेटिकली, जस्ट आइडियली स्पीकिंग, अगर कोई मौका मिले तो कोई नेटवर्किंग होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए। अच्छा जी मैडम फाहिमा, आपने कहा है कि होनी चाहिए। मैडम ऐना ने कहा था होनी चाहिए, जी, मैं जी। भी कह रही हूँ होनी चाहिए। चले तो अच्छी बात है। और खवातीन की सिर्फ होनी चाहिए या बाकियों की भी होनी चाहिए? क्योंकि अगर सिर्फ खवातीन एग्री करती हैं तो आई volunteer here to help you build your female judges network. मेरे ख्याल में जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो भी हो कोई भी हो लेकिन होनी चाहिए। So I think as future leaders you can start working on this idea as a concept and you can start floating this idea because I'm sure कि जब आप करेंगे, for example हम लोगों ने जिस वक्त coordinate करना होता है तो हम internationally we are at the same time operating at in 160 countries। मतलब I can just pick up my phone और अगर मुझे किसी मतलब there is even something related to gender policy या कोई मुझे उसके ऊपर जजमेंट लेनी है। पिछले दिनों हम लोगों ने खवातीन का जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमने उनका हाइट का क्राइटेरिया चेंज करना था। So what I did was I just picked up the phone and I contacted 3 to 4 countries। उन्होंने मुझे immediately respond किया कि हमारा ये पहले था और हमने उसके अंदर ये चेंज किया and this is the way to go about it। मैंने immediately उस पॉलिसी को उसी तरीके से लिखा और मैंने अपने सारे आईडीज को भेज दिया और वो immediately that was done। तो रिफॉर्म डज नॉट एक्चुअली रिक्वायर कि आपने पूरे कमीशन बने तो आप रिफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका एक रिकग्नाइज नेटवर्क हो तो अगर लेट से जिस तरह अभी मैडम फाहिमा ने कहा है कि हो सकता है शायद आपको खवातीन जजेस की जरूरत नहीं है नेटवर्क की, लेकिन अगर आप कोई जुडिशरी का नेटवर्क बनाते हैं तो यू कैन इमीडिएटली कॉल अ सर्टेन कंट्री एंड रीच आउट टू दैट कंट्री आस्किंग कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम श्योर कि आपको भी प्रॉब्लम आता होगा, हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। सो रादर देन ट्रायल एंड एरर से 30 साल हम और जो है वो बार बार मिस्टेक से सीखे, इट इज always wise to learn from other people's mistake। हम फॉर एग्जांपल जब यूएस से पूछते हैं, यूके से पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं तो वो आमतौर पे कहते हैं कि जी ये जो अभी आप अपने मसाइल बता रहे हैं ना 30 या 40 साल पहले हमारे भी इन्वेस्टिगेशन में भी ये प्रॉब्लम्स थे, हमारे रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स थे तो हमने उनको ऐसे एड्रेस किया था। सो राइट अवे हमें ना ट्रैवल करना पड़ता है ना जस्ट हमें सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर या एक ईमेल के ऊपर हमारे बहुत सारे मसाइल का जवाब मिल जाता है। सो आई थिंक दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे टू address the problems if you think that is the right way। तो I'm sure कि ये जो भी 27 लोगों की क्लास है इनमें से हो सकता है कि अगले 10 सालों में कुछ पूछे और सोचे और फिर उसके बाद कोई नेटवर्क स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट पे जाइएगा। अच्छा, बैरियर्स भी होती है नेटवर्किंग में। बाज़ों का यू आर नॉट श्योर कि हम नेटवर्क जब बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, हमारी एबिलिटी कम है, हमारी पता नहीं क्या स्किल चाहिए, तो नेटवर्किंग में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक्सटर्नल हेल्प की बाज़ों का आपको उसमें जो है रिक्वायरमेंट होती है और आप एक्सटर्नल हेल्प जो है उससे अपने नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हैं। बाज़ों का आपको ये डिफ़िकल्टी होती है कि आप दूसरों से हेल्प लेने में हिचकिचा रहे होते हैं और आप फौरी तौर पे अगर किसी बंदे ने, कल हमने इसकी बात की थी कि दैट यू हैव टू रिटर्न अ फेवर, प्रोबेबली यू आर आस्किंग समबडी फॉर अ फेवर लेकिन इमीडिएटली आपके लिए वो रिटर्न करना प्रॉब्लम हो तो आप कहते हैं कि जी इससे बेहतर है कि ना मैं किसी से कोई सवाल पूछूं ताकि अगर वो कल को मुझसे कोई पूछे तो मैं भी कहूँ कि जी आई कैन नॉट डू दिस। वांटिंग टू रीच गोल्स विदाउट एनी स्पेशल हेल्प फ्रॉम अदर्स। अच्छा, हम करते ही ये कि हम अपने करियर्स के अंदर जो है ना द वंस हु आर एम्बिशियस, we are ambitious but we completely rely on कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो we will reach our goals। जो स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो है अपने काम के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि अगर आप किसी से मेंटरिंग या कोचिंग ले रहे हैं, श्योर कि जब आप लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया होगा और आपने एज इंटर्नीज या अपने एज अंडर ट्रेनिंग जजेस जब काम किया होगा तो ऑब्वियसली आप मेंटर्स ढूंढते हैं, कोचेस ढूंढते हैं, कोई पुराने आप जजेस के साथ काम करते हैं, कोई अपने पुराने अगर किसी के ऑलरेडी फैमिली में कुछ प्रोफेशन में है तो आप उनसे मेंटरिंग लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि जब आप नौकरी शुरू करते हैं और पब्लिक सर्विस शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको मेंटरिंग कोचिंग की जरूरत होती है। जैसे जैसे यू रेज हायर आपकी मेंटरिंग कोचिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है।
एंड देन देयर इज अ कंसर्न अबाउट शेयरिंग सेंसिटिव और कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्किंग के अंदर जब एक दफ़ा आप नेटवर्किंग आप समझते हैं कि जी मैं इसके लिए नेटवर्क करने में इंटरेस्टेड बिकॉज मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास चली जाएगी या ये कि दूसरा भी मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन आवर एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्किंग टेल्स अस के शेयर्ड जो गोल्स और परसेप्शंस के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाते हैं एंड यू कैन ग्रो टुगेदर एज अ ग्रुप। जी सर, उमर आपकी कोई? जी मैडम, थैंक यू। बस मैं इसमें नेटवर्किंग के हवाले से थोड़ा एडिशन करूंगा कि तमाम जो जज साहबान हैं, जस्टिस साहबान हैं, रिटायरमेंट के बाद वो हमारा प्रोफेशन जो एडवोकेसी है, बीइंग अ लॉयर एडवोकेट, जी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये एक हमारा बड़ा अलमनाई नेटवर्क है हमारा। ठीक है। ऐसे तमाम जो जजेस हैं जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो आ जाते हैं बार एसोसिएशन में। उनका जो लेसन विद हेड होता है ड्यूरिंग जॉब वो ऑन अपना करवा देते हैं, उसको स्टार्ट करवा देते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी नेटवर्किंग होती है हमारी, गवर्नमेंट जी नेशनल इंटरनेशनल अच्छा, टूर्स होते हैं करेक्ट, और तो बड़ा अच्छा है। बहुत सारे जो हमारे जज साहबान हैं वो हमारे साथ यूएस या मुख्तलिफ जो कंट्रीज के जो स्टडी होते हैं या कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो, उनके अलमनाई के बेहिस्सा होते हैं ये। जिस तरह ठीक है। पाक यूएस अलमनाई नेटवर्क है, उनके भी जस्टिस साहबान मेंबर हैं। तो इस तरह का जो बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास नेटवर्किंग, वो हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं। तो उसमें ठीक है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनसे नेटवर्किंग की, लाइजन की और जो एक्सपायर होता है। और उसके अलावा बहुत सारे रिटायर्ड जज साहबान हैं, जस्टिस साहबान हैं, जिन फिलैंथ्रॉफी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ट्रस्ट बनाई हुई है, फाउंडेशन बनाई हुई है, जो रिटायरमेंट के बाद ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग में हैं जो जुडिशरी से बंदे हैं, कहीं न कहीं मौजूद। हाँ, बिल्कुल जी इस तरह या कोई टाइम नहीं दे पा रहा अपनी सोशल लाइफ को, अदर बिज़नेस में चला गया है, बैक साइड होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो जजेस हैं, तो वो जस्ट माजिदा रिज़वी आप देख लें, वो हमारी सिंध में नहीं, ये सारे सर, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, दैट इज के जिस तरह रिटायर्ड की नीड्स होती है ना, वो वैसे भी वेरी सॉरी टू से बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन हो जाता है। मैं हाजिर सर्विस की बात कर रही हूँ, हाजिर सर्विस के भी तो मसाइल होते हैं ना। हाजिर सर्विस को सबसे ज्यादा कोचिंग की जरूरत होती है, मेंटरिंग की। तो वो किधर जाए, वो किससे पूछें कि जी मुझे एक क्योंकि 100% तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता ना कि मुझे सारा काम आता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टक समवेयर, आई हैव टू आस्क समवन कि जी मुझे बताएं कि अगर इस तरह का केस है तो अब मैं इसको कैसे करूँ। तो अगर इफ आई आस्क सम सीनियर ऑन अ प्लेटफॉर्म जो कि एक रेकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ये होता है कि इमीडिएटली आपका मसला रिजॉल्व हो जाता है कि रादर देन वेटिंग कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस वक्त आप एक नेटवर्किंग का हिस्सा बन जाएंगे। आई होप दैट यू एग्री विद इट। जी, जी, एग्री हैं, बिल्कुल एग्री हैं। जी बस नेक्स्ट पे आई थिंक कि हम एक फुरकान नेक्स्ट स्लाइड पे इनको आप वो इसके बाद शो कर दें कि इनका एसिंक्रोनस वर्क जो मंडे को होगा वो हम इनके साथ शेयर कर लेते, सो दैट कल जो संडे का इनके पास दिन है उसमें उस पर काम कर सके। सो द स्ट्रैटेजीज, just we will talk about the strategies and then we move to the asynchronous work. So strategies for building an effective network, they usually include organizing your current network अगर तो आपका कोई exist करता है, otherwise you go and identify if you need a network and see what its purpose is. Identify people you already know and enter their names into a database, and then you try to develop strategies to expand the network and nurture the relationships. Now that all depends कि अगर तो आप network, जिस तरह से भी मेरी ये उमर साहब से भी बात हुई है कि अगर तो आप recognize करते हैं कि आपको mentoring और coaching और horizontal growth के लिए ज़रूरत है, फिर तो network obviously आप strive भी करेंगे. But if you think that you are 100% satisfied and content with the way things are going, तो फिर तो obviously there is no need to go in such a direction. बट आई एम श्योर कि क्योंकि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत महसूस की जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नेटवर्किंग जो है वो फॉर्मल वे में जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। ये फुरकान प्लीज़ इनको शो कीजिएगा जो इनका मंडे के लिए है, जिसमें एसिंक्रोनस वर्किंग का लास्ट स्लाइड है जी। अब इसमें ये प्लीज़ देखिएगा कि आपका आप इंटरनेट पे जाइए या अपने सीनियर से, जिस तरह अभी सर उमर ने बताया कि जी जुडिशल नेटवर्क आपका एक रिटायर्ड उनका मौजूद है, वो करते हैं वहाँ पर, वो फॉर्मल नेटवर्क नहीं है। देखिए कि अगर आप पाकिस्तान में कोई आपके हैं ऐसे जो फॉर्मल जुडिशल नेटवर्क्स है, अगर नहीं तो प्लीज़ कम अप विद 3 नेम्स ऑफ जुडिशल नेटवर्क्स एट द इंटरनेशनल लेवल। वो यूरोपियन मैंने जिस तरह आपको बताया वो वहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जुडिशल नेटवर्क्स मौजूद है, उनके बस 3 के आपने नाम लिखने हैं
और सेकंड टास्क ये कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट बनाएं, should not be more than 400-500 words, could be even less than that. उसके अंदर सिर्फ आपने ये बताना है कि जी अगर कोई नेटवर्क बन सकता है तो उसका क्या नाम होगा, उसका क्या पर्पस होगा, उसके क्या फंक्शन होंगे। जैसा मैडम पायमा ने कहा कि जी आपको प्रॉब्लली किसी विमेन जजेस बेस्ड नेटवर्क की ज़रूरत ना हो, तो अगर कोई जजेस का आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, सिर्फ सिविल जजेस का लेट से बनाना चाहते हैं कि सिर्फ सिविल जजेस उसके मेंबर्स हो, तो आप उस नेटवर्क का एक नाम प्रपोज करें, उसका एक पर्पस प्रपोज करें और उसके फंक्शंस के 2 या 3 क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा नेटवर्क। If there is any question तो प्लीज मुझे बताइए। So then let's call it a day, and if there is any problem regarding the exercise तो आप उस पे WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं। So see you on Monday then. Have a nice weekend all the participants. Thank you. थैंक्स वेरी मच। ये जो असाइनमेंट है आप लोगों का ऐसे क्लास, ये मैं अभी कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा LMS पर, और आप लोगों को एक्सेस हो जाएगा इस असाइनमेंट का। उसके अलावा अब आप लोगों के पास 3 असाइनमेंट्स हो गए हैं, और आई बिलीव कि अभी आप में से बहुत सारों ने कल वाला असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, तो इट इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट कि अपने असाइनमेंट्स जो है वो काइंडली सबमिट करवा दें, और उसके दरमियान अगर कोई भी मुश्किल आ रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए हम हैं यहाँ पर। आप बस काइंडली बस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उस डॉक्यूमेंट को ही एडिट करके उसको सबमिट करा दिया करें। पेज पे लिखें या तस्वीर लेके कराएंगे तो उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट में अपने जवाबात को मेंशन करके, अपने जवाबात को, अपने रिस्पॉन्सेज को उसमें पुट करके आप उसी डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करवा सकते हैं सेव करके। ठीक है, सो दिस इज अ रैप। हम यहाँ पे अपने सेशन का इंतजाम करते हैं। कल छुट्टी है, इट इज संडे टुमारो, और विल बी मीटिंग ऑन मंडे 3:30 शार्प लाइव। थैंक यू सो वेरी मच।